Now we are live on the Facebook. Bharti ji, please start. Thank you so much, Sunil ji. Namaskar, everyone. First of all, I request Sanjay Rana ji to start the program with mantras. Sanjay ji. Sanjay Rana ji. Om Agahat Samshayam Bhuje Samvataranatarini Vande Vichiprat Padam Chitram Tam Gurvaritim Anajaya Akhilajaye Mayane Gatmayane Arupaya Sarupaya Shivaya Gurave Namah Yasminunme Nishabhyam Jagata Pralayodayo Tam Shakti Chakravibavam Prabhavam Shankaram Sukma Na Jayatu Na Japita Syat Yasyad Vidipurvakam Evamev Shiva Basat Tam Namo Bhaktishalini Vishwatmikam Tatputirnam Hridayam Parameshato Aradishakti Rupena Sufarantim Samvidam Namah. Pranam. Yeah, Bharti ji, please read the citation. Am I audible? Hello? Yes. Once again, I welcome everyone to the third day of week-long celebration of Mahamaheshwara Acharya Abhinav Gupta Jayanti, which started from 15th June and will continue to 21st June. During these lecture series, we are lucky to have great scholars of Tantras and Kashmiri Shaivism who enlightened us with their great knowledge about Sri Abhinav Gupta, one of the India's greatest philosopher, mystic, and aesthetician from Kashmir. Abhinav Gupta is considered to be the foremost authority on Shaivism. He was also considered as influential musician, poet, dramatist, leaving a persistent mark on the culture of India. Sri Abhinav Gupta was a great tantric yogi who made an invaluable contribution to the development and restoration of the spiritual tradition. Now, starting with our today's session, it gives me immense pleasure to introduce our today's first speaker, Dr. Mark Lichkowski, one of the world's foremost scholars on Tantra and Kashmir Shaivism. He was born in London, and after finishing his schooling, he came to India in 1969, where he began his sadhana and study of Sanskrit and Sitar. He has lived and studied Kashmiri Shaivism for over 40 years. Both as a scholar and a practitioner, he was initiated by the great Indian teacher Swami Lakshmanju. He is also a disciple of Professor Sanderson, Pandit Chakrabarti ji, and Shivaji Vallabh Dwivedi ji. He is affiliated with several major academic institutions in India and universities in Europe. In addition to his academic pursuits, Dr. Mark has studied sitar throughout this period.
Now, without taking much of the time, I would like to invite Dr. Mark to enlighten us with his wisdom. Welcome, Dr. Mark. Sir, you have to unmute your mic. Gurudev, please unmute your mic, sir. डॉक्टर मार्क जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए. अच्छा. Yes. ओम सहुकराये नमः. गुरु शक्तिर्यत्येका मद्रूपा प्रविकाशिका स्वरूप गोपन व्यग्रा शिव शक्तिर्जिता जया. I'm sorry, and well, just a second. Hello? Yes. Well, tomorrow this time, if you can. Please, thank you very much. I'm sorry. Thank you. Thank you very much. Okay, excuse me. There's such a vast subject, sometimes it's hard to know where to begin. I think one thing that made a great impression on me, that in the past 50, 60 years of being involved and in study research, many things have been discovered that help us to understand, even more astonished and wonder at the greatness, the genius of Abhinavagupta and the Shaiva tradition that he managed to encompass so perfectly in his understanding, in all its complexity, and yet at the same time to find what is really most essential. And this is beautifully, so I think first of all, we, in the 50s and 60s, the great Professor Pandey and others before with K.C. Had a certain understanding of Kashmiri Shaivism, according, not that it's a wrong one, it's a very good one, but resources were limited at that time. Since then, we have made great discoveries of Abhinavagupta sources, many of Abhinavagupta sources, and from that we have learned many things that fit perfectly well with what is said before, certainly doesn't contradict them, supports them and gives them greater depth, and makes us, as I said, wonder and marvel even more at Abhinavagupta's colossal mind and that of all the gurus and the environment in which he grew up in Kashmir and in those wonderful centuries from 8th, 9th, 10th, 11th, 12th century Kashmir. Shaivism, goes back, as we know, to Vedic times.
it went through, developed through into Pashupata Shaivism, and then from Pashupata Shaivism, they on the one side, and then from them developed the first tantras, the Siddhanta Agamas, and from about the 5th, 6th century AD. Parallel to this, there were public Shaivism, not temples, but shrines and public Shaivism. So what happened from 5th, 6th century AD up to the 9th century with the coming of Abhinavagupta, and then the 2-3 generations after that for Abhinavagupta with Vasugupta and the Shiva Sutra. Then after that, Abhinavagupta are really very interesting and very important. It's first of all, we notice that, see, for the past 40, 50 years, I and others have been engaged in recovering these sources and laboring a great deal in recovering these sources and seeing to learn, edit them, study them, and to gain a better understanding of what Abhinavagupta has been teaching. The nucleus around that are the teachings of the Kashmiri masters in general, and Abhinavagupta in particular, says Janti. As far as this Shaivism is concerned, his works, his Trika works. He made enormous contribution to aesthetics, to dramaturgy, to Pratyabhigya, and I just want to focus for a moment to focus on his unique contribution to the development of Trika Shaivism. 5th, 6th century AD, we have the first tantras appear, the Nishwasa Tattva Samhita, the Brahma Yamala, the Siddha Yogeshwari Mata. These earliest tantras within 2 or 3 centuries, they've grown to quite a large number. They fall into a number of categories. The Siddhanta Agamas, Matanga, Mrigendra, we find Abhinavagupta. Abhinavagupta is a mirror into this past, is a window into this past. The text that he quotes, what he quotes from them, give us a vision through his eyes of the whole development and range of Agamic or Tantric Shaivism. This is one approach. Of course, there's other, yes. So I'd like to look at that first. And then we also look at his teachers. Anyway, look at that first. Tripratyam idam jnanam guruta shastrata swataha. This knowledge, that is to say, the insight through which you develop by Shaktipat, a recognition of your Shiva nature, has 3 sources and 3 proofs that this is correct. One is from your guru, the other is coming from scripture, and the third is coming from personal insight. So the Abhinavagupta drew extensively from, was nourished from these 3 sources, to which he continuously returns throughout his work, harmonizing them in a way which is very unique and very insightful. So Shastras, you have the Siddhantas, Siddhantas, Yamalas
Krama Tantras, Trika Tantras. And you can think at the time that there is the public domain. And in the public domain, you have Shaivites and Vaishnavas and so on. And they are worshipping Lord Shiva. In that worship is open to everybody or the public domain. And amongst them develops in the 5th, 6th century groups of Shaivites who center their practice around scripture revealed by Lord Shiva, and to which you have access through initiation. So these scriptures range through two large, you might say, these scriptures are revealed. Traditionally, it is said through Shiva's 5 faces. And the scripture, the upper face reveals the Siddhanta Agamas. There's the southern face and the northern face. They reveal tantras of the left and the right, and the eastern and western, they reveal the tantras of those directions. The tantras of those directions are Garuda tantras and Bhuta tantras, and this has become very long. My goodness. See, one thing that is very, so the earliest that we have is the Nishwasa Tattva Samhita that belongs to about the 5th century AD. That centers around the worship of forms of Shiva, Rudra, who becomes a mild form of Shiva like Sadashiva. And we have another great tantra called the Brahma Yamala that instead they center their worship on the figure of Bhairava and his yoginis and consorts, female attendants and goddesses. And about the same time, at an early period, we have tantras, the first Trika tantras, called the first one is the Siddha Yogeshwari Mata, that was also been edited, the characteristics of which is the worship of 3 goddesses, Para, Para, and Apara, who are worshipped on the tips of a trident, in a trident mandala, with their respective mantras, vidyas, of which they are embodiments. Within a group of the Siddhanta Agamas were more concerned with the worship of Sadashiva, Shiva, and they developed a very extensive and very beautiful phenomenology of 36 tattvas, and that is discussed a great deal in those works, and regular rites for initiation, daily rites that are centered around those initiatory rites, based basically on the worship of Shiva with a mantra called Ekashiti mantra, Shadadvan. Trika Tantras. Now, Trika Tantras developed, which are the ones that interest us most,
developed along with them. Those were it took some centuries. Along, of course, initially for the first 200 or 300 years, the tantras were transmitted were explained. When you took initiation, you would be given a copy, or you would have an access to a copy of the tantras. And what was taught there would be taught to you, or part of what was necessary for you to perform the ritual and yogas that they taught. And it took at least 200 or 300 years before commentaries came to be written on these tantras, and before therefore we had people who we knew who emerged out of the anonymity of the tantras into being historical figures. So one of the earliest of those was a man called Sadhya Jyoti, who lived perhaps around the 8th century, with another man called Brihaspati, and these were Siddhantids. They wrote commentaries on tantras, the Raurava Agama, the Swayambhuva Agama, and they independent works. Brihaspati wrote was the Shivatanu Shastra. These gurus, some 2 generations, 3 generations later, they came, a man called Sri Kanta, then Narayana Kanta, Ramakanta, another Ramakanta, who were all Siddhantins, who were all Kashmiris, who wrote commentaries on the Siddhantagas, Mrigendra Agama, Matanga Parameshwara, and others. Now, at the same time, now those, what is the core there of the teaching are the 36 tattvas and a system of worlds through which you travel in ascending. As you ascend the worlds, you go through these 36 reality levels. As you go through the reality levels, the individual soul is purified of karma, of maya, and anavamala, and that takes place through Lord Shiva's Shakti Pata. As to the degree that purification takes place, then the soul advances through these levels from world to world until ultimately is conjoined to Lord Shiva, pure with Lord Shiva. This is what takes place in initiation. Once that has taken place in initiation, then it is the duty of the initiate to maintain that state of purity by continuous observance of ritual procedure, observance of right conduct, and maintaining a state of ritual purity as far as possible, and atoning for times where there have been omissions or some things have been done wrong. Then at the time of death, if the balance of karma is good, that is to say, more karma has not been accumulated since
because at the time of initiation, karma is removed, except the karma that's required to stay alive. So if in maintaining ritual purity, all the rituals and right conduct, etc., and atoning for transgressions or omissions, if at the time of death the balance is such that karma is not much, or Lord Shiva's grace is great, then at that point the individual soul is liberated, and that liberation means that he's freed from the impurity of the different Anava Mala and Karma Mala and Mahiya Mala, and he becomes like Lord Shiva in all respects, except that Lord Shiva has been liberated and free from the very beginning and has never been bound. So he is Anadi Shiva. So this is one path, and this you might call the gradual path. And it's a path that Abhinavagupta sustains, maintains. He takes a great deal of trouble to describe it in all its detail, in its essentials, in his Tantra Loka, and especially, and he says he spends a very large part of his work in his Tantra Loka in teaching that. And he has a mastery of Siddhanta, which is really extraordinary. One wonders who his teachers were. At one point, he refers to Ramakanta, who is one of the commentators of the Matagga Parameshwar, and refers to him as a guru. Now, that may be that is simply respect, or it may have been that he was literally learning from him. He does say that he learned from people of all kinds, Shaivites, and he also even studied with Vaishnavas, and even with Buddhists. He tells us that in his Tantra Loka. But he preferred, above all, the way of Trikashaivism. And the way of Trikashaivism is a path that has a number of traditions that follow, just like you have the basic pattern for the Siddhanta, so you have another basic pattern. And that basic pattern is that you progress through a series of empowerments. The idea is that the soul is weak. The individual soul that is fettered because he lacks freedom, he lacks Shakti, and it is through initiation that this avesha takes place, this penetration of the energy of Lord Shiva, the energy of Shakti, various aveshas there may be, and through this process of avesha, then the impurity, the mala that is limiting the soul, that is making the soul weak and contracting it and binding it, is removed. It is like a kind of burning away with the force. Now that way requires, in Abhinavagupta's analysis and the texts themselves, the Tantras, a very special and intense grace. It's also with the Siddhanta. But the difference is that, a very big difference, is that the idea is with the Siddhanta that full liberation is not possible while you're alive. Why? Because the body, the senses, the mind, and the world itself that we live in form part of a large complex that the Siddhanta called pasha, fetters, that bind the individual soul. So it's only when these fetters are removed that the individual, what is preventing his contact and becoming conjoined to Lord Shiva, and is taken away. Now, that is not the idea in this other parallel way, the way of empowerment, the way of immediate realization through empowerment. The way of realization through empowerment is that the senses, the mind, the body that we have are limited senses, limited mind, limited body. When through empowerment of the senses, they are extended in their power.
when the mind to empowerment is extended in its power, when the body is transformed from just a physical body into a cosmic body, a body that contains the worlds and the tattvas, a body that contains all the energies of which Lord Shiva is constituted, then in that body, in that mind, with those senses, no, then we see and we experience as Lord Shiva does. Shaktayastu Jagat Kritsnam Shaktimanstu Maheshwaraha. All the universe are made of energies, and the possessor of that energies is Lord Shiva. So those energies together, operating together, configuring in infinite number of forms, form the body, the senses, the mind, the world in which we live in, the whole psychophysical organism. They are the manifestation of that Lord Shiva, who at the universal level manifests in a cosmic body, you might say, through and each and everything, and at the individual level manifests in our individual world, in our individual senses, through our individual mind. So when the senses, so in this other way, the other way is that of empowerment. Now empowerment, so we find empowerment takes place through Shakti. Shakti means power, of course. So these traditions emphasize the role of Shakti. These traditions emphasize the role of Shakti. They remain Shaivite, they are Shaivite, because the Tantras that teach these, the practices, that teach these ways to realization, that teach the rituals, etc., the yogas, they are taught by Lord Shiva. So they are Shaivite. But Lord Shiva is teaching in a form as Bhairava. He is Bhairava. And he is teaching the practices and yogas and rituals and so on that bring about and are centered on and develop out of Avesha. Avesha means empowerment, means penetration into the body, senses, and mind of the Shaktis of Lord Shiva, of Bhairava. So this takes place. Now, the initiation in the Siddhanta takes place as a long ritual procedure. It can take days to enact. Not necessarily, it can be shortened also. But it is a gradual procedure of what is called Tattvika Diksha or Yojanika Diksha, a Diksha in which you are conjoined to one world after another. And as you go from lower to higher worlds, your karma is consumed. If I have karma, I am reborn into the next, another life with a particular body, that particular world. I live in that world, and the karma, that amount of karma is consumed. And then I go to the next higher world, and the next amount of karma is consumed, until I travel through all the worlds and I reach Shiva Tattva, Shiva's world. In fact, the earliest agamas like Nishwasa Tattva Samhita, this ascent, the model of ascent was through the worlds. And the worlds are arranged within the tattvas. Almost the worlds are more important originally than the tattvas, because the idea was one of ascent, and they got that from the Pashupatas before them. This was an idea that goes back, that you've got travel through the worlds, that, there's the earth, and then there's middle regions and the heavens, but here this becomes a real modality of ascent. No. Parallel to that, parallel to that is empowerment. Say, you see, at the beginning, I'll give you an example. At the beginning of the Siddha Yogeshwari Mata, see, Trika, Kashmiri Shaivism, what we call loosely nowadays, non-dualist Shaivism, we center around the Trika system. Trika system is grounded in scriptures that are called Trika Tantras, of which the oldest and the main one is the Siddha Yogeshwari Mata.
Okay, we've lost most of that or some of that, but now at the beginning of that Siddha, it is full of rituals that are centered around the worship of the goddess Para, Para, Paranapara, and other deities, mostly feminine, but not entirely. Bhairavas and Matrikas and Yoginis and so on there. Now, the initiation that is taught there, is given very briefly in the first chapters of what is remained of the recension. That you are to go to a cremation ground. The man is alone. The person that is taking this Diksha is going alone. He may go with the Guru, but the way it's described, he's alone. And what he does, he goes on a night where there's no moon, and he makes offering. He takes some blood from his veins, his hands, and he sprinkles this blood in the cremation pyres. And as he's doing that, he recites the mantras of the goddesses of Trika. And as he does so, in the night sky, little lights grow brighter and brighter and brighter until he can see that they're raining down on him like balls of fire, forms that as they approach, he can hear sound, roaring, shouting, and these are yoginis, very fierce yoginis. And the instruction is that he must stand firm and continue with his japa and his offerings to the fire, until what happens, if he is successful, they enter into his body with great force. And then what happens? He looks around and he experiences what is called Mahavyapti, great pervasion. This is also in Siddhanta. As you go up the tattvas, you become more and more pervasive. From earth, you go to heaven, to sky, and so on. But this Mahavyapti is the vision of the goddess Para. He sees her everywhere and in all things, right? And of course, within himself. This is the Diksha. Now the text will tell us, you see here, Abhinavagupta, he characterizes this after tremendously detailed study and presentation of the essence of the different kinds of tantras. He has this to say, and he's quoting from, he's saying, well, how do we compare these different ways? The gradual path of the Siddhanta, or the radical empowerment of Trika and other tantras belonging to those kind of traditions that we may call Kaula. And he says here, and he's quoting the Kula Ratnamala. In the course of time, within 3 or 4 centuries, 2 or 3, a number of Trika Tantras developed that Abhinavagupta quotes from. His Tantra Loka. His Tantra Loka is the essence of all of the Shaivism, Agamic Shaivism, Siddhanta, and of all kinds that there is, centered around the basic idea that all of Shaivism finds its culmination in Trika. So the main Tantra, so of all the Tantras, the best Tantras are Trika, and of all the Trika Tantras, the best Tantra is the Mali Vijayottara. Everything is contained in the Mali Vijayottara, whether stated explicitly or implicitly. Now, to support this view, he quotes extensively from Siddhanta Tantras. He quotes extensively also from Kali Krama Tantras, and he quotes from Trika Tantras. So Trika Tantras includes the Yogeshwari Mata, the Mali Vijayottara, the Tantra Sadbhava, the Trika Sara, the Trika Sadbhava, the Trishiro Bhairava, the Bhargashika, the Viravali, the Daivya Yamala, the Kularatnamala, and others. Unfortunately, we only have Siddha-Yogeshwari Mata in a short recension, Mali Vijayottara, and the Tantra Sadbhava, these 3. Now, the point is that he, looking at all these, and they're very extensive,
but his mind was so wonderful that, when he read 1,000 pages, or he was instructed he could catch in just a verse or 2 verses, 3 verses, what was most essential of all of that he had, thousands of verses that he had studied. Right? Now, in this synthesis, which he would call looking for the essence, he said that he would study with many teachers of many traditions. In those days, in the Kashmir Valley, there were teachers of different lineages, different tantras, transmitting these tantras and their knowledge. He would study with them, he would say the essence. So this was the approach also that he found in scripture. And this was the approach that he also found from his guru, his Trika Guru Shambhunatha, and his other gurus in other traditions. Now here he says, towards the end of his Tantra Loka, which is his encyclopedia and exposition of Anuttara Trika Shaivism, which is a synthesis of all Shaivism from the higher perspective of Trika. He says, the Supreme Lord has declared in the Venerable Ratnamala that the essence of all the Tantras, present in those of the left and the right, is united in one place as Kaula doctrine found in the illustrious Trika system. In the Siddhanta, he says there is an excessive abundance of outer ritual, which is moreover sullied by the impurity of the ignorance of Maya and so on, because they're very much centered and obsessed, you might say, focused on impurity and ignorance and purification, which is not a bad thing, but it's dominant in them. Now, the current of the right abounds with fierce black rites, because they are, which Abhinavagupta is not interested in, and the left with siddhis. So stay away and so on. Now, what he says, then what he says, stay away from those things. And he then quotes a verse from the Nishi Sanchara Tantra, which is another Trika Tantra. He says that when the teacher reveals the one reality, free of thought constructs, the disciple is liberated at that very moment. All that remains is the machine of the body. So this is immediate realization through transmission, sankramana. This is immediate realization through transmission. It comes about through an essentialization. So Abhinavagupta explains how this takes place, how all how everything is brought together within Trika, the whole of the Agamic tradition. He says, and this is in the Mani Vijayavartika. Thus, the threefold Tantra exists, which is called Rudra, Shiva, and Bhairava. The Rudra Tantras are 18 Siddhanta Agamas, the Shiva are the 10 Siddhanta Agamas, and the 64 Bhairava Tantras. For in fact, the reality of knowledge unfolds threefold through duality, duality come non-duality, and full union with non-duality. Thus, the main powers of Shiva are three, namely will, knowledge, and action. But amongst these powers, a conjunction of powers, energies takes place by extension. So these three powers together constitute the triad, which is supreme. And such a Shastra, in which these three energies of will, knowledge, and action that combine and are the essence of teachings that are both duality and non-duality, and full non-duality. He says, such a Shastra, he says, resides in the house of my Guru in an unbroken tradition. Abhinavagupta said. In the 9th century, 10th century, when he lived, this Trika tradition was in the house of his Guru Shambhunatha, and who came to Kashmir, and he brought this tradition, Trika tradition with him, unbroken from his Guru
um, Sumati, and Sumati had learnt it from a Bhairavacharya in Dakshinapita. And therefore, now he says there's a proximity of the Shastras, of the left and the right, and the stream of the highest aim unfolds as the Kaula one. Therefore, as Bhairava is completely filled with the limitations of the objects he has absorbed and is nourished by the sound that emerges from the highest reality, he embraces the three powers, Apara, Parapara, and Para, in the three streams of Ishana, Vamadeva, and Agora. Ishana is master of Apara, Vamadeva is master of Parapara, and Agora is master of Para. Now, as so he unfolds the division of duality, he is the one who makes it manifest, and three, then he wishes to devour this endless form of Shiva. In reality, he is taught to be only three-headed, because he's the three-headed Bhairava. Before, in the previous revelation, the one we find more in the Siddhanta Agamas is that he's the five-headed Sadashiva, with the upper face of Ishana, and then the other four faces also teaching scripture. But Abhinavagupta tells us that the main scriptures are just in these three currents, and that these three currents are taught by the three faces of the three-headed Bhairava. And they are three because first he unfolds the division of duality, and then he makes it manifest, and then he withdraws it all into himself. So as the tantras of the upper current, that is the Siddhanta tantras, of the left and the right, as well as the kulas, are centered in the highest stream, and so they lose the contraction due to duality. Having become threefold, this doctrine of Trika, Trikarta, which deals with the highest light, is taught by Shiva, is taught by Lord Shiva. So the Abhinavagupta is this synthesis is so the so on Abhinavagupta's Trika Shaivism incorporates into itself what is most essential of non-dualist Shaivism. It incorporates into it the Pratyabhigya, and it incorporates the teachings of Somananda, who received the teachings of non-dual Shaivism from the lineage of Srikanta, from who sent it to Durvasa, and then down through a lineage of teachers through an oral tradition till it came down to him in Kashmir, and he made it manifest in the Shiva Drishti. And he was a teacher of Utpaladeva, and Utpaladeva wrote the Ishvara Pratyabhigya. So this was a non-dualist Shaiva tradition that came down through oral transmission. This Trika Shaivism has come down through scriptural tradition that was transmitted to Abhinavagupta by his Guru Shambhunatha. And what it contains is that it contains not only revelation, but also explanation. It contains the revelation of the oneness of Lord Shiva and his radiant powers and energies, all his Shaktis that are becoming manifest in manifestation, and also in all the teachings of all the Tantras. And it also contains within itself the explanation of that revelation, which is the recognition of Shiva's non-dual oneness in a flash of recognition. So Abhinavagupta continuously leads us on these two paths. One is the path of gradual attainment. My goodness, it's time to end. By following the sixfold path of the 118 worlds, the 36 tattvas, and the 5 spheres of energy within which they are contained, and the mantra of 81
parts that is uttered, and in uttering it, you travel through those 118 words. Then all the parts of that mantra, and then all the single letters of that mantra. This is called the sixfold path. And that is being, Abhinavagupta spends a great deal of time expounding that in his Tantraloka, and this is the gradual path of attainment. And in parallel to that is the higher path of immediate realization that comes through direct empowerment. The direct empowerment is not so radically in the cremation ground. It's an empowerment that takes place, what is most essential about it, directly through the deity, mediated by a guru, or even sometimes without. Master would just look at his disciple. Master would just touch his disciple. Master would just say a word. And when the disciple is ready, that will completely transform his state of consciousness from his limited conception of himself to an unlimited conception of his Shiva nature. And that transmission, then in that way, the disciple is initiated, and in that way, the tradition is transmitted from master to disciple. And this was what Abhinavagupta taught essentially in Tantraloka by going through the essence of the scriptures of his day, the more dualist ones and the non-dualist ones, in order to integrate them all into the oneness of Trika, and the oneness of Trika is explained through the doctrine of the philosophy of non-dualist Shaivism, which is the Pratibhigya, the doctrine of recognition. So all of this he managed to put together when he was, I think, in his 30s. I just like to finish there, that Swamiji, Swamiji says that Abhinavagupta died in his 90s, but there's a strong scholarly opinion that he died in his 50s. Either way, it is certainly astonishing that this man, when he wrote this Tantraloka, when he'd reached the peak of his transmission of Trika Shaivism, he was probably in his 30s. So I would just like to finish with what he has to say. So Satanya Baddham Vidade Mahartam Yuktyagamurudita Tantra Tattvam Alokam Asadya Yadiyamesha Loka Sukam Sancharita Kriyasu Santunu Grihita Kritim Tadiyam Grihitam Purvam Vidiresha Tavat Tatopi Grihnatu Bhavanmatim Sa Sadjanu Grihnatu Chatat Tattva Dartrishtaya. Thus he composed this greatly precious work, Maharta, which is expounded the essence of the Tantras. He's saying of his Tantraloka, which is the essence of Trika Shaivism, and hence the essence of all Agamic Shaivism. He expounded in accord with reason, Yukti, and the tradition, Agama. Easy is the practice of their rites once the people of this world have acquired its light. So it's aloka. May you who are good, receive well this his work, but first of all, seek to grasp it. This is the rule. And may that also lay hold of your mind and soon grace it by the vision of the reality it bestows. So this is Abhinavagupta's way of transmitting immediately is through his Tantraloka, is through his thought, is through his consciousness, which is perpetual Shiva consciousness. And the essence of Shaivism is transmitted and is understood above all in this way. Thank you very much. Adios. Om. Purnam Thank you. Mada. Yes. Om
अब तो यहीं रहो ना तुम। Oh, हाँ वो टॉवेल लाओ इधर से, oh, छोटा टॉवेल तो लाओ, छोटे कैसे चलते हैं नीचे उठो, ऊपर ऊपर चलते हैं। Purnamada Purnamidam Purnamata Purnam Udachyate Purnasya Purnamada Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Jai Gurudev. Okay, thank you very much. I'm sorry, I'm not well today. I've just had a long session with the dentist and several other accidents. These are matters that actually take years to explain. And it's Swamiji's greatness was that he would explain in 5 or 10 minutes what would take years to understand. And Thank you, Acharya ji. Thank you, Marji. It was really, Thank you very much. it was really illuminating. I think we all got soaked into the bliss of Abhinava's teachings, and we were all carried back into that divine nectar, into that divine orb where we experience traces of that sparks today. It's all Thank due you. to the grace, and you're joining us today. Bharti ji, please, in the meantime, I would like to also welcome all the scholars who have joined today, especially Harmohan Mishra ji. Dr. Harmohan Mishra ji has joined us from Puri. Shri Rajnish Mishra ji from JNU, Delhi. Shri Surendra Mohan Mishra ji from Kurukshetra. Shri Ashutosh Angira ji from Ambala. Dr. Sushma Jattu ji from again from Delhi, and other scholars here. So my pranam to all of you. So we welcome you all in this today's talk series. Bharti ji, please take it forward. Ji, thank you so Thank you very much, much. Dr. Mark. It Thank was you. really great to hear you. I would like to invite Ashish Zadu ji to give you thanks to him. Ashish ji, Ashish Zadu ji. Ashish Zadu ji, can you hear me? I can hear you. Can you hear me? Ji, ji. Can you hear me? Please. Okay. Dhanyavad Bharti ji. Pranams to everyone, to all the learned scholars, especially today's pranam special goes to Dr. Dishkowski. I have to say, the more we learn, we hear about Abhinava, the more we want to hear. Yeah, the less it seems. Yeah, his life, his works, everything from gurus like Mark Dachowski, who are modern acharyas, new word acharyas. The more we hear, the less it seems. I also remember one thing from Tantra Loka, which Abhinava said. I would like to read it. I'm not a good reader of Sanskrit. In English, it says, "It is only the black bee and not the honey bee which has the enormous appetite for the fragrance of Ketaki flower. Similarly, only those rare people who are guided from within by the grace of Shiva find interest in absolute non-dualistic worship of Bhairava, the one perfect whole of everything." So I feel, this black bee eligibility which is there, by listening to Shastra, by listening to Abhinava, his works, and Guru Jans, we develop those tendencies to, like the black bee, to hear, to get attracted to this Bhairava Tantra more and more, to get attracted to this non-dualistic more and more. And also, Markji said in his lecture, Abhinava had many gurus. Yeah, this also shows his humility and humbleness to learn, which is very important for learning. Yeah, which is said in Bhagavad Gita also. Vinay is important for learning. So his humbleness, his openness to learn different traditions, and how he assimilated all this together and culminated into Trika Shaivism, which Markji said, that Agamic Shaivism of today. So I would like to thank again Markji for such a wonderful, beautiful insights into Abhinava's life and into his teachings, and give my pranams to everyone once again. Thank you very much. Thank you so much, Ashish ji. Now we have Dr. Mohanlal Gupta ji with us, who is a practitioner of medicine for the last 40 years. His Gurudev, Sri Hari Vilas ji, initiated him in the non-dual philosophy in 1999. So
There's a disturbance, please mute कर लीजिए. जी. Later, he started learning Shaivism from Ma Prabha Devi ji. He is running Harihar Trik Ashram since 2010, where a symposium on Kashmiri Shaivism is organized every Thursday evening. Today, Dr. Mohan Lalji is going to enlighten us on the concept of Parmeshwara in Kashmiri Shaivism. Welcome, Dr. Mohan Lalji. Dr. Mohan Lalji. Namaskar. Namaskar. Can you hear me? जी. Yes. नमस्कार सारे श्रोताओं को और आश्रम के समस्त आगंतुकों को मेरा नमस्कार और अभिनवगुप्त पदाचार्य जी की जो जयंती हम मना रहे हैं उस सब की बधाई। हम जो अभिनवगुप्त जी का जयंती समारोह मना रहे हैं वो उनका परिचय देना मेरी क्षमता के बाहर है, क्योंकि वो सदियों में कोई ऐसे महान दार्शनिक होते हैं जो सदियां भी उनका जो गौरव है उसे कम नहीं कर सकते। तो ऐसे थे अभिनवगुप्त पदाचार्य जी, और हम आश्रम में जो यहाँ पर पिछले 11 वर्ष से कार्यक्रम कर रहे हैं उसके बारे में एक अति संक्षेप में आप सबको बताऊं कि यह हमारा जो हरिहर त्रिक आश्रम है मध्य प्रदेश के महेश्वर शहर में, इसका एकमात्र उद्देश्य है अभिनवगुप्त पदाचार्य जी की शिक्षाओं के आधार पर काश्मीर शिव दर्शन का प्रसार करना। इसके साथ ही हमारे गुरुदेव जी की जैसी इच्छा थी, वो चाहते थे कि जब हम शिव दर्शन लोगों को समझाएं बताएं तो वो इतनी सहज सरल भाषा में सरलीकृत हो ताकि लोगों को ठीक से समझ में आ सके। तो यहाँ पर पिछले 10 वर्षों से जो हम कार्यक्रम करते हैं उसका मूल उद्देश्य होता है कि जो इसकी मूल अवधारणा है काश्मीर शिव दर्शन की, उन अवधारणाओं को मनुष्य के हृदय में आत्मसात करने का उसे यहाँ पर आने पर अवसर मिले। तो इसी अवधारणा के साथ में हम यहाँ काश्मीर शिव दर्शन के कार्यक्रम प्रति गुरुवार को करते हैं। आज जिस विषय पर हमें चर्चा करना है, परमेश्वर का स्वरूप काश्मीर शिव दर्शन के अंतर्गत। सबसे पहले हमें समझने का प्रयास करते हैं कि परमेश्वर के स्वरूप को खोजना क्यों पड़ता है, क्या आवश्यकता पड़ती है परमेश्वर के स्वरूप को खोजने की, और भिन्न भिन्न विधाओं से लोग उसे भिन्न भिन्न तरह से खोजते हैं। परमेश्वर का स्वरूप लोग अनादिकाल से खोजते आए हैं, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से खोजी रहा। अन्य जीव जंतुओं की तरह उसे मात्र आधारभूत विवेक प्राप्त नहीं था और अनेक विशिष्ट विवेक प्राप्त था, जिसके द्वारा वो जानना चाहता था कि ये संसार क्या है, ये सूरज क्या है, ये चंद्रमा क्या है, ये धरती क्या है, मैं कौन हूं, मेरा इस संसार में आने का क्या उद्देश्य। इस प्रकार के प्रश्न अनादिकाल से मनुष्य को परेशान करते आए थे। उसी में उसने कभी चंद्रमा को भगवान माना, उसने माना कि कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो इस समस्त प्रकृति को नियंत्रित करती, कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो इस धरती, मनुष्य और इस प्रकृति का एक रिश्ता बना के रखती है। और कहीं ना कहीं उस अदृश्य शक्ति की खोज में मनुष्य सतत रहा। पहाड़ों को पूजा, नदियों को पूजा, चंद्रमा, सूर्य, जो ये अत्यंत प्रकट वस्तुएं थी, इन्हें परमेश्वर के रूप में जानने का प्रयास किया, क्योंकि ये शक्तियां कहीं इनमें निहित हैं, इनमें छिपी हैं। इस प्रकार का उनका भाव था। और उस सब के बाद धीरे धीरे उसकी प्रज्ञा विकसित होती चली गई। बीच में समय समय के साथ ऋषिगण आए, उन्होंने अपने अंतर प्रज्ञा से
अंतर प्रज्ञा से मनुष्य के स्वरूप को लोगों को समझाने का प्रयास किया और स्वयं समझने का प्रयास किया कि ये सृष्टि क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। इसी तारतम्य में मनुष्य के बुद्धि के भिन्न भिन्न स्तरों पर मनुष्य के जो आरंभिक स्तर, उच्चतर और सर्वोच्च स्तर पर परमेश्वर के भिन्न भिन्न स्वरूप मनुष्य को प्रतीत होने लगे। उसे पता लगने लगा कि परमेश्वर क्या है। सनातन जो हमारी धर्म परंपरा है, ये केवल धर्म नहीं वरन एक पूर्ण दर्शन है। और इस सनातन परंपरा में हर स्तर के व्यक्ति के लिए, चाहे वो उच्चतर बौद्धिक स्तर का व्यक्ति हो, चाहे सामान्य बुद्धि का व्यक्ति हो, चाहे वो नितांत अशिक्षित हो, सबके लिए परमेश्वर के स्वरूप का कुछ न कुछ अनुभव देने की क्षमता इस सनातन विद्या में है। आरंभिक रूप से मंदिर, तीर्थ स्थान, पवित्र नदियां, पवित्र ग्रंथ, धीरे धीरे उच्चतर स्तर पर पवित्र ज्ञान और उच्चतर स्तर पर ध्यान, योग की क्रियाएं और अंततः आत्मबोध, इस स्तर तक मनुष्य को, उसकी प्रेरणा को, उसकी प्रज्ञा को उच्चतर स्तर तक ले जाने का ऋषियों ने राह बताई, ज्ञान बताया। अद्वैत सचमुच में मूल धारणा है और ये मूल धारणा मनुष्य की प्रज्ञा से समझ में आई और ये आना ही थी, क्योंकि ये सृष्टि जब मनुष्य ने एक इकाई की तरह देखना शुरू किया, ये सृष्टि एक इकाई है, एक यूनिट है, तो उस इकाई में भिन्नताओं के बीच में उस प्रज्ञा ने एक अभिन्नता को खोज लिया, पाया कि इस सब के बीच में, इस सारी डायवर्सिटी के बीच में एक यूनिटी है। तभी तो ऋषिजन कह सके कि जानत तुम्हें ही हो जाएगी, तुलसीदास जी ने कहा था। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि बनाई, इस सृष्टि बनाने के क्रम में उसने विभिन्न रचनाएं बनाई। इस सब के काश्मीर शिव दर्शन में बहुत अद्भुत उदाहरण हैं और अद्भुत तर्क हैं और उनका प्रस्तुतिकरण बड़ा ही सुंदर है। तो मैं आपको थोड़े थोड़े उदाहरण से बताता हूं कि हमारे शिव दर्शन में कहां कहां पर इनके बारे में बताया गया है। ईश्वर की अवधारणा को सिद्ध करने के लिए, उसे समझने के लिए कि ये चैतन्य स्वरूप है, आपके आत्मा का स्वरूप है, ईश्वर प्रतिभिज्ञा कारिका है, जिसमें परमेश्वर के स्वरूप को निरूपित किया गया है। बताया गया है कि ये शुद्ध चेतना स्वरूप है जिसमें विभिन्नता समाहित है। ये शुद्ध चेतना रूप है, इसका अपने आप में कोई ऐसा रूप नहीं है जिसे हम कह सके कि ये इन गुणों से युक्त है, वो गुणों से परे है और शुद्ध चेतना स्वरूप है। परमेश्वर ने इस सृष्टि को क्यों बनाया? क्योंकि जब ये सृष्टि बनी तभी तो परमेश्वर की खोज आरंभ हुई। अगर ये सृष्टि ना होती तो परमेश्वर को कौन खोजता? वो स्वयं ही अपने आप को जानता। अब चूंकि वो स्वयं ही है और कोई है ही नहीं, तो स्वयं अपने को भूला, फिर वो स्वयं को जान रहा है। जब तक वो भूला नहीं था तब तक जानने का भी कोई कारण नहीं था। जो अपने आप को भूला तो उसी के बाद उसने अपने आप को जानने का प्रयास किया। ईश्वर प्रतिभिज्ञा बताती है कि जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तो स्वयं से, अपनी ही शक्ति से 5 आधारभूत अवयव बनाए। ये सब जानना परमेश्वर को समझने के लिए आवश्यक है। तो हम पहले ईश्वर प्रतिभिज्ञा की बात करते हैं कि उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाने के क्रम में सर्वप्रथम अणु बनाया, तदंतर शक्ति इसमें समाहित की, तदंतर अंतरिक्ष बनाया
और अंततः समय बनाया। इसके बाद इसमें अविद्या समाहित की, अंततः इसमें अविद्या समाहित की। क्यों? अविद्या वो मैट्रिक्स है, वो बेस है, वो आधार है जिस पर ये सृष्टि का दृश्य चित्रित है। ये समस्त सृष्टि अविद्या पर आधारित है। जब तक अविद्या है तब तक मल है, तब तक ये संसार टिका है। जैसे ही अविद्या का नाश होता है, जैसे ही ज्ञान है, वैसे ही संसार लुप्त हो जाता है। तो परमेश्वर ने अविद्या को बनाया। यहां पर हम उसको माया के रूप में देखते हैं। माया की सबसे अच्छी व्याख्या काश्मीर शिव दर्शन में की गई है, जहां पर कि माया के 5 कंचुकों के द्वारा इस सृष्टि के उद्भव के बाद जो जीव, उन सबका सीमांकन किया और उन्हें इस स्मृति से दूर किया कि मैं स्वयं शिव हूं। क्योंकि उस स्मृति के बाद किसी तरह का कर्तव्य न तो किसी का बचता है, न किसी की तरह का राग बचता है, न किसी तरह का कोई काम बचता है जो उसको करना हो। इसलिए इन 5 कंचुकों के द्वारा उसे अविद्या से ग्रसित कर दिया गया। इस तरह से ये 5 अवयव हम अगर समझें तो ये 5 अवयव परमेश्वर ने सृष्टि बनाने के लिए जो बनाए हैं, इन 5 अवयवों से ही सृष्टि निर्मित दिखाई देती है। जो अणु बना उससे मटेरियल वर्ल्ड बना, उस वर्ल्ड के लिए जो जगह बनी वो स्पेस थी जिसमें ये सृष्टि अपना नाटक कर सकती थी। तीसरा, अंतरिक्ष के साथ ही समय की उत्पत्ति हुई, क्योंकि समय अनादि नहीं है, न ये अंतरिक्ष अनादि है, न ये परमाणु अनादि है। अगर ये अनादि है तो अपने मूल स्वरूप में, अपने चैतन्य स्वरूप में अनादि है, लेकिन जिस रूप में आपको प्रतीत होते हैं उस रूप में ये सृष्ट है, ये बनाए गए हैं। अब यहां हम समझें कि किसी भी वस्तु को हम संसार में देखते हैं तो हमको उसका एक तात्कालिक कारण दिखाई देता है। जैसे एक वृक्ष का तात्कालिक कारण हमको बीज दिखाई देता है कि इस बीज से वृक्ष आया, हम इस वृक्ष का कारण बीज मानेंगे और उस बीज का कारण वृक्ष मानेंगे। ये हमारा सृष्ट कारण है, सांसारिक कारण है। लेकिन हम यहाँ पर नियति के कारण उसके मूल कारण को भूल जाते हैं, जबकि उसका मूल कारण है शिव, परशिव, या उसका हम जो भी नाम दें। लेकिन हम तो यहाँ पर काश्मीर शिव दर्शन में उसे परशिव कहना पसंद करते हैं। इसलिए परशिव ने अपने से बीज भी बनाया, अपने से वृक्ष ही बनाया। अन्यथा फिर पहले उलझ जाती कि पहले बीज आया है, पहले वृक्ष आया। तो ऐसे किसी भी पहले की यहाँ पर स्पष्टतः व्याख्या है कि बीज और वृक्ष दोनों का मूल कारण परमेश्वर शिव है। यहाँ पर पूर्ण सृष्टि जिसके हम सत्यों को अगर खोजें तो वो सत्य, जब प्रतिबद्धता से हम सत्य की ओर अग्रसर होते हैं तो वो चैतन्य पर ही जाकर ठहरता है, जिसके 2 पहलू हैं, प्रकाश और विमर्श। तो यहाँ पर हम सत्य को ही ईश्वर कहते हैं। उस ईश्वर के 2 पहलू हैं, एक प्रकाश पहलू यानी उसका अस्तित्वगत पहलू, और एक उसका विमर्श अर्थात उसकी शक्ति। विमर्श ही उसकी शक्ति है। और चूंकि इस सृष्टि का वो एकमात्र केंद्र बिंदु है जहां से उस सृष्टि का संचालन होता है, जहां से सृष्टि का उद्गम होता है और जहां पर सृष्टि का प्रभाव भी होता है, जहां पर कि हम कहें कि वही सृष्टि का उद्गम भी है और अंतिम विश्राम भी है, उस स्थिति को हम शिव बोलते हैं, उसको परशिव बोलते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर की चेतना, वही चेतना जो निराकार है, निरूप है, उस रूप से ही, निरूप से ही समस्त रूपों का उद्भव हुआ है, जिसे हम स्पंद में कहते हैं ये सुन्मेष निमेषाभ्याम जगत प्लयोदयो तम शक्ति चक्र विभव प्रभम शंकरम स्तुमा। हम इस तरह परमेश्वर की स्तुति करते हैं। स्तुति इसलिए करते हैं कि अभी हम केंद्र में नहीं है, अभी हम केंद्र से दूर हैं, तो हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। क्यों स्तुति करना है? स्तुति का क्या महत्व? स्तुति का एक ही महत्व है कि हम अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को डिफाइन कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं कि परमेश्वर शिव मेरा
लक्ष्य है, इससे इतर किसी और चीज के लिए मेरी खोज नहीं है, और इससे कमतर किसी चीज पर मैं समझौता नहीं करूंगा। इसलिए कहते हैं शंकर स्तुमा, मैं शंकर को प्रणाम करता हूं। जैसे अगर आप यहां से किसी तीर्थ स्थान जाते हैं तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि मुझे वहां जाना है, और जो सच्चा तीर्थयात्री है, जो प्रतिबद्ध तीर्थयात्री, वो उस तीर्थ से दाएं बाएं नहीं देखता, वो उस सीधे सीधे उस तीर्थ तक जाता है और वहां पर अपना काम करके वापस आता है। तो यहाँ परमेश्वर शिव हमारा लक्ष्य है, इसलिए हम उसको प्रणाम करते हैं। हम लक्ष्य को सदैव प्रणाम करके अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। हम आरंभ करते हैं कि ये मेरा लक्ष्य है और मैं मुझे इस परमेश्वर शिव की खोज करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कहते हैं कि शंकरम स्तुमा, यानी जहां पर परमेश्वर की आंखें खोलने से या बंद करने से इस सृष्टि का उदय और अंत होता है। यानी सृष्टि का आरंभ भी परमेश्वर शिव की चेतना से होता है और उसका अंत भी, यानी रीअब्जॉर्प्शन, वापस अपने आप में समेट जाने की क्रिया भी परमेश्वर शिव से होती है। इसके अलावा परमेश्वर शिव की जो हमारी अवधारणा है काश्मीर शिव दर्शन में, वो सतत क्रियाशील शक्ति के रूप में। कुछ भिन्न दर्शन शिव को या परमेश्वर को निष्क्रिय शांत ब्रह्म के रूप में मानते कि वो निष्क्रिय है, वो मात्र दर्शक है, वो कुछ भी नहीं करता। ऐसी परिस्थिति में इस सृष्टि के उद्भव को उसकी व्याख्या करना कठिन है। कोई भी एक संतोषजनक व्याख्या करना माया के लिए भी कठिन है। अगर हम माया को कहें कि वो भी सनातन है तो फिर दो सनातन हो जाएंगे, परमेश्वर भी और माया भी। लेकिन यहाँ परमेश्वर की, शिव की अपनी ही शक्ति से, परमेश्वर शिव अपनी ही शक्ति से स्वयं को सीमित कर लेता है। बचपन में किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि क्या भगवान इतना बड़ा पत्थर बना सकते हैं कि वो स्वयं ना उठा सके? तो आज प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है कि हाँ, वो ऐसा पत्थर बना सकते कि जिसको वो स्वयं ना उठा सके, क्योंकि माया को बीच में लाकर स्वयं बोल सकते हैं कि मैं शिव हूं, और तब वो उस एक छोटे से पत्थर को ना उठा सके। और ये हो ही रहा है। अभी अगर 50 किलो का पत्थर हो तो आप भी नहीं उठा सकते, जबकि आप शिव हो, लेकिन आप उस पत्थर को नहीं उठा सकते क्योंकि माया बीच में है। वो आपकी कार्य करने की शक्ति को सीमित कर चुकी है, आपकी जानने की शक्ति को सीमित कर चुकी है, आपके संतोष को सीमित कर चुकी है, आपकी सनातनता को सीमित कर चुकी है, वो आपकी स्वातंत्र को, सर्वव्यापकता को भी सीमित कर चुकी है। इस तरह के 5 कंचुक आपको एक सीमित जीव बना देते हैं। अब इस केंद्र की अवधारणा को हमारे 3 तरह के शास्त्र हैं। आगम शास्त्र, शिव दर्शन में प्रतिभिज्ञा, यहां पर आगम का जो सर्वोच्च ग्रंथ है वो है शिव सूत्र। शिव सूत्र का प्रथम सूत्र कहता है चैतन्यम आत्मा। आत्मा का मतलब अंतिम सत्य, आत्मा का मतलब केंद्रीभूत सत्य, द सेंट्रल रियलिटी, द कोर रियलिटी। तो अंतिम सत्य परमेश्वर ही है और वो चैतन्य रूप है। अब हम कहें कि यह अंतिम सत्य किसका? यहां पर जब वो अनस्पेसिफाइड है, उसको यहां विशिष्टीकरण नहीं किया गया। इसका मतलब वो अंतिम सत्य समस्त सृष्टि का, समस्त अभिव्यक्ति का अंतिम सत्य। अब एक आप कंकर लो तो भी उसका अंतिम सत्य चैतन्य है, एक व्यक्ति का भी अंतिम सत्य चैतन्य है, और एक सूर्य चंद्र धरती सबका अंतिम सत्य चैतन्य है। तो इस तरह से भगवान के स्वरूप या परमेश्वर के स्वरूप को एक ही श्लोक के 2 ही शब्द चैतन्य महात्मा, इसी से निरूपित किया गया। ये शांभव उपाय है जहां आप अपने ही चिंतन से परमेश्वर के स्वरूप को पा लेते हैं। या परमेश्वर के स्वरूप को जानना ही उसके स्वरूप को पा लेना है। परमेश्वर के स्वरूप को जानना, बुद्धि के स्तर पर जानना, फिर हार्दिक स्तर पर जानना, और अंतिम रूप से उसको अपने अस्तित्व के स्तर पर उसका बोध होना। इसी क्रम से परमेश्वर को हम जान, समझ और उसका बोध प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में भगवान ने
स्वयं के बारे में बड़ा अच्छा बताया है। हम कई बार उसकी चर्चा कर भी चुके हैं, यहाँ प्रसंगवश वो बातें हम फिर से बताते हैं। अभी हम कुछ दिनों से गीतार्थ संग्रह पढ़, अभिनवगुप्त पताचार्य जी ने इस पर कुछ विशिष्ट टिप्पणियां की हैं। कुछ लोगों की टिप्पणियां जो निश्चित रूप से पहले के आचार्य ठीक से नहीं व्याख्या कर पाए थे, उन्हें अभिनवगुप्त पताचार्य जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की है। जैसे एक बड़ा प्रिय श्लोक है जो इस शिव दर्शन में बड़ी अच्छी तरह से व्याख्यायित, श्रीमद् भागवत गीता। तो उस श्लोक को बताता हूं। बलम बलवताम अस्मि कामराग विवर्जितम, बलम बलवताम अस्मि कामराग विवर्जितम, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भर्तर्षभ। ये इसमें क्वांटम फिजिक्स है, कि क्वांटम फिजिक्स भौतिक शास्त्र का वो हिस्सा है जो अनजाने में आध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। जानबूझकर प्रवेश नहीं किया, अनजाने में। क्वांटम भौतिकी का जब विकास हुआ, वो विकास अपने आप होता चला गया, अपने आप वो ऐसी दिशा लेता चला गया कि जो आध्यात्मिक दिशा थी। अब यहां पर हम इस सूत्र को शिव दर्शन के हिसाब से समझें। बलम बलवताम अस्मि, भगवान कहते हैं कि मैं बलशाली का बल हूं, बलशाली का बल हूं। लेकिन वो उसको फिर स्पेसिफाई करते हैं कि कैसा बल। एक तो वो बल होता है कि अपने विरोधी को उठा के पटक दे, ऐसा बल हो सकता है कि उससे वो चोरी कर ले, डकैती डाल ले, लोगों का बुरा कर दे। या ऐसा भी हो सकता है कि उस बल से वो दान धर्म करने लग जाए, पूजा पाठ करने लग जाए। लेकिन भगवान कहते हैं मैं ऐसा बल नहीं। कैसा बल हूं? काम राग विवर्जितम, जहां पर कि किसी तरह की कामना, किसी तरह का राग वहां पर नहीं है, उसकी अनुपस्थिति है। जहां कामना की अनुपस्थिति है, राग की अनुपस्थिति है, वैसा बल मैं हूं। उसके बाद उन्होंने जो बात कही वो बड़ी सुंदर है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भर्तर्षभ। इसकी बहुत गलत व्याख्या हुई है। गलत व्याख्या भी बता दें। गलत व्याख्या ऐसी हुई थी कि मैं कामनाओं से रहित, धर्म से अविरुद्ध जो भी क्रियाक्रम है, कर्मकांड है ना, उस रूप में मैं। लेकिन ये अभिनवगुप्त जी को ठीक नहीं लगी व्याख्या। लेकिन उन्होंने जो व्याख्या की वो एकदम समझने लायक है, एकदम सीधे सीधे आपके अंतस में उतर जाते हैं। जो या तो काश्मीर शिव दर्शन जानते हैं या जो भौतिक शास्त्र में क्वांटम भौतिक जानते हैं, उनके लिए ये तो वरदान की तरह है। ये लाइन कैसे बोलते हैं वो कि धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भर्तर्षभ। यहां काम से मतलब है इच्छा शक्ति, भगवान की इच्छा शक्ति और ये संसार, ये इन दोनों का धर्म अविरुद्ध है। समस्त सृष्टि भगवान की इच्छा शक्ति से अविरुद्ध है और भगवान की इच्छा शक्ति आपके अंदर भी उपस्थित है। अगर आप सांसारिक कामनाओं से काम नहीं कर रहे हैं, आपके भीतर इच्छा शक्ति है, जो कामनाओं से जब आप मुक्त हो तो वो इच्छा शक्ति और आपकी इच्छा शक्ति एक है, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो जब आपकी इच्छा शक्ति और ईश्वर की इच्छा शक्ति एक हो जाती है तो समस्त सृष्टि और वो इच्छा शक्ति भी एक हो जाती है। तो समस्त सृष्टि की इच्छा शक्ति और समस्त सृष्टि, इसके समस्त प्रमेय, भिन्न भिन्न लोग, सूर्य चंद्र तारे आसमान झरने चिड़िया मनुष्य, अच्छे लोग बुरे लोग, भलाई बुराई, खुशी दुख, दिन रात, ये सब कुछ उस इच्छा शक्ति से अभिन्न है। अगर यहां पर एक मटकी मिले जो कुछ हजार बरस पहले बनाई गई थी तो तय है कि यह उस समय एक कुमार की इच्छा शक्ति थी जिसके द्वारा इसने सृष्टि में प्रसूत किया। सृष्टि में परमेश्वर की इच्छा शक्ति, सृष्टि परमेश्वर की इच्छा शक्ति में पहले उत्पन्न होती है, तदंतर वह परमेश्वर उसका अभिव्यक्ति करते हैं।
ऐसे ही एक कुम्हार के मन में मटकी पैदा होती है और कुम्हार उसको अभिव्यक्त करता है। ऐसे ही एक कविता एक कवि के हृदय में जन्म लेती है, वो परावाणी में जन्म लेती है, वो पश्चंती में अपना रूप घड़ती है, वो मध्यमा में शब्द लेती है और वेखरी में वो प्रसव हो जाता है। वेखरी में वो कविता कागज पर आ जाती है। तो वो जब कागज पर आ जाती है तो उसकी जिम्मेदारी उस कवि की होती है। अब उसके द्वारा समाज पर होने वाले प्रभाव की जवाबदारी किसकी है? उस कवि की है। जब तक वो मध्यमा तक में थी, जब तक वो उसके अंतस में थी, भीतर थी, अनअभिव्यक्त थी, तब तक वो उसकी अपनी निजी संपत्ति थी। जैसे ही वो सृष्टि में आती है वो उसकी निजी संपत्ति नहीं रह जाती, वरन वह अब एक पब्लिक डोमेन बन जाती, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। उस समय उसकी जिम्मेदारी होती। तो इस सृष्टि में अगर एक मटकी मिलती है तो एक कुम्हार का अस्तित्व सिद्ध है। अगर इस सृष्टि में जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है उसका अगर हम अस्तित्व खोजे, उसको हम मूल अस्तित्व खोजें। प्रणाम माता जी, नमस्कार करता हूं प्रभात देवी माता जी। तो अगर हम उस सृष्टि में उसका मूल अस्तित्व खोजें तो वो चैतन्य ही है और वही चैतन्य परमेश्वर है और उसी को जानने से हमारी खोज पूर्ण हो जाती है। उसी को जानना और उसी को हो जाना, दोनों में कोई भेद नहीं है। अब यहीं पे गीतार्थ संग्रह में ही भगवान कहते हैं कि मुझे तुम चार तरह से पहचानो। इस सृष्टि में चारों तरफ मैं हूं, अभिव्यक्त हूं, और इस अभिव्यक्ति के भीतर भगवान को खोजना है तो हमको उसकी एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगी, एक धारणा बनाना पड़ती। तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि मुझे अध्यात्म के रूप में देखो, अधिदेव के रूप में देखो, अधिभूत के रूप में देखो और अधियज्ञ के रूप में देखो। इस तरह से चार रूपों में मुझे देखो, और इन चार रूपों में अगर आप मुझे देखते हो तो समस्त सृष्टि में जिधर भी देखोगे तुम्हें मैं ही दिखाई दूंगा। आध्यात्म के रूप में ये जीव की आत्मा है, अधिदेव के रूप में वो प्रकृति पुरुष है, जो इस समस्त सृष्टि में होने वाली जो हलचल हमको दिखाई देती है, ये हलचल उसी की शक्ति है। अधिभूत के रूप में वो समस्त जड़ सृष्टि, चाहे हमको पहाड़ दिखते हैं, सूर्य चंद्र धरती मकान आश्रम, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है उस सब के रूप में मैं हूं। ये समस्त जड़ अभिव्यक्ति है, वो मेरी ही अभिव्यक्ति है। और इसके बाद में वो कहते हैं यज्ञ, किसी यज्ञ का याज्ञिक भी मैं हूं, यानी भोक्ता भी मैं ही हूं। यानी यज्ञ का यहां पर मीनिंग है एक प्रोजेक्ट। हम जो कुछ भी करते हैं एक यज्ञ है, सृष्टि में है जो कुछ भी करते हैं एक यज्ञ है। हम मकान बनाते हैं यज्ञ है, हम कुछ पूजा करते हैं तो यज्ञ है। लेकिन यज्ञ के भिन्न स्वरूप हैं। कुछ हम कामनाओं के वश यज्ञ करते हैं। कोई एक प्रोजेक्ट होता है कि इसको हराना, इसको प्रतिस्पर्धा में हराना, इससे आगे बढ़ जाना, ये कामना परक यज्ञ है। या एक वो यज्ञ है परमेश्वर के प्रेम के लिए किया जाता है, जहां पर हम चाहते हैं कि हम ईश्वर को प्रेम करें, हमको ईश्वर प्राप्त हो, वो भी एक यज्ञ है। तो यहां पर भगवान कहते हैं उस समस्त यज्ञ का भोक्ता और उसका फल देने वाला मैं ही हूं। इस रहस्य को अगर हम जानते हैं तो हम समझते हैं कि भगवान समस्त छोटे और बड़े फल वही देता है। वो तो बड़े से बड़ा स्वयं को देने को राजी है। परमेश्वर स्वयं को देने को राजी है। अगर तुम उसको सर्वोच्च की भावना से उस यज्ञ को करते हो, पूछते हो, तो वो स्वयं को आपको अर्पित करने को राजी है या आपको स्वयं में समाहित करने को राजी है। लेकिन हम अगर छोटे छोटे देवताओं के रूप में परमेश्वर की पूजा करते हैं या छोटे छोटे कारणों से यज्ञ करते हैं तो उसमें हमारी छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति करने का काम भी वही सर्वोच्च परमेश्वर करता है। हम एक छोटे से देवता के रूप में ईश्वर को यजन करते हैं तो छोटे से देवता का रूप भी वो परमेश्वर ही है। वही उस
छोटे से देवता का रूप लेके तुम्हारी छोटी सी कामनाओं की पूर्ति कर देता है। लेकिन यदि हम उस छोटे से देवता की भी बिना किसी कामना के, बिना किसी स्वार्थ के, मात्र प्रेम के कारण पूजा करते हैं, तो उस वक्त वह छोटा सा देवता भी, उसके लिए की गई पूजा भी सर्वोच्च परमेश्वर तक पहुंच जाती है। इसलिए हम क्या पूज रहा है, कोई क्या यज्ञ कर रहा है, किस तीर्थ में जाता है, किस देव को मानता है, किस धर्म का इंसान है, इस सबसे अलग हटके हम उसको नहीं देख पाते। लेकिन वह स्वयं क्या है ये ईश्वर देखता है, क्योंकि उसके अंतस के अंदर ईश्वर बैठा है और उसके अंतस की कामनाएं वो देखता है। उस कामनाओं के अनुसार उसे फल मिलता है। अगर वो कामना से विहीन है तो कर्म फल से मुक्त है, उस कर्म के फल से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर वो उस कामनाओं में लिप्त है तो उस कामनाओं के द्वारा उसे जो प्राप्ति होती है उसकी कीमत देने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है, क्योंकि अंततः उसे उस प्राप्ति की कीमत देना पड़ेगी, उसे कर्म का फल भोगना पड़ेगा। यहीं पर भगवान आगे कहते हैं कि मैं जल में स्वाद रूप से हूं, चंद्र सूर्य का प्रकाश हूं, धरती का गंध हूं। यहां पर किसी विशिष्ट स्वाद या विशिष्ट प्रकाश की बात नहीं है, वरन एज ए क्लास समस्त प्रकाश मैं हूं, समस्त गंध मैं हूं, समस्त स्वाद मैं हूं। यानी इस सृष्टि में, इस सृष्टि का जो समस्त अनुभव है, इस अनुभव के रूप में भी मैं ही हूं। यानी अब इसके बाद अगर आप चारों ओर नजर घुमाएं तो जड़ दिखेगा, चेतन दिखेगा, गतिविधि दिखेगी, एक्टिविटी दिखाई देगी, जीव जंतु चलते फिरते दिखाई देंगे, लोग दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं हर तरह का यज्ञ होता दिखाई देगा और समस्त अनुभव होंगे, प्रकाश दिखेगा, संगीत दिखाई देगा। इस सब के बीच आपको मात्र ईश्वर का दर्शन होंगे, क्योंकि आप इन सब रूपों में परमेश्वर को देखेंगे। समस्त सृष्टि में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रमेय हैं, उनका स्वरूप ज्ञाता से भिन्न नहीं है। ये ईश्वर प्रतिभिज्ञा का भी स्पष्ट उद्घोषणा है और यही उद्घोषणा भौतिक शास्त्र की, क्वांटम फिजिक्स की है कि जो कुछ भी सृष्टि है वो ज्ञाता से भिन्न नहीं है। जो जानने वाला है उससे अभिन्न है। जानने वाला परमेश्वर है और सृष्टि भी परमेश्वर का स्वरूप है। उसमें जो भिन्नता दिखाई देती है वो गुणों के कारण है। जो 3 गुण हैं उन गुणों के कारण भिन्नता दिखाई देती है। वो भिन्नता अगर हमको न दिखाई दे, कब दिखाई न देगी? जब हम उन तीनों गुणों का स्रोत भी परमेश्वर को जानेंगे कि वो 3 गुण भी परमेश्वर से आए हैं, जिसके कारण ये अष्टधा प्रकृति निर्मित हुई है, जिसमें पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार और इनके पीछे खड़ी जीवात्मा जो उसकी परा प्रकृति है। उस परा प्रकृति के पीछे परमेश्वर खड़ा है जो अक्षरधाम से शुरू होकर समस्त सृष्टि के एक पत्थर तक इस सब की रचना करता है। इस तरह से जब हमारी भावना बनती है तो समस्त सृष्टि में हमारी ईश्वर दृष्टि हो जाती है। तो काश्मीर शिव दर्शन कहता है कि परमेश्वर अरूप भी है और स्वरूप भी है। वो विश्वमय भी है और विश्व से उत्तीर्ण भी है, विश्वोत्तीर्ण भी है और विश्वरूप भी है। समस्त सृष्टि का जो पसारा दिखाई देता है, जो फैला हुआ संसार दिखाई देता है, वो परमेश्वर का स्वरूप है। और जो संसार से परे है वो भी परमेश्वर है। अब हम परमेश्वर को भिन्न भिन्न रूपों में खोजते हैं कि परमेश्वर, लेकिन वो हमारे आरंभिक अवस्थाएं हैं जब हम खोजते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में है, परमेश्वर गोलोक में है, परमेश्वर कहीं बहुत दूर बैठा है, इंद्रलोक में बैठा है। इस तरह की हमारी आरंभिक भावनाएं होती हैं। लेकिन उन आरंभिक भावनाओं से आगे बढ़ना नितांत आवश्यक है, तभी हम उस समस्त सृष्टि के रचयिता के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम उसको जानते हैं तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने लगता है, बदलाव आने लगता है, हमारे जीवन में बदलाव आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि इस वक्त अब हमें हमारी भावनाओं पर अपने आप नियंत्रण होने लगता है। अब हमें क्रोध किस पर करेंगे, छीनेंगे किससे, खोएगा क्या, बदला किससे लेंगे?
क्या आप आपकी उंगली से बदला लोगे अगर ये आंख में चली जाए तो? अगर आपकी उंगली आपकी स्वयं की आंख में चली जाए तो आप बदला लोगे क्या इस उंगली से? चलो इस उंगली ने आपके दूसरे हाथ से कांटा निकाल दिया तो क्या इसको पुरस्कार दोगे? यहां पर ये पाप पुण्य के दो रूप हैं। जब पाप और पुण्य है तो वहां पर दो का होना आवश्यक है। जब तक दो अंतरक्रियाएं नहीं होती, दो भिन्न सत्ताएं अंतरक्रियाएं नहीं करती, तब तक पाप पुण्य का कोई अस्तित्व नहीं है, कर्म फल वहां पर अनुपस्थित। अब हम पाप पुण्य की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हम आपको मुझसे अलग समझते हैं और हमको आप मुझसे अलग समझते हैं। आप समझते हो मैं अलग हूं, ये अलग है, इसका धन मेरी जेब में आ जाए तो मैं धनवान हो जाऊं, लेकिन अगर मेरे इस जेब का धन दूसरी जेब में चला जाए तो क्या होगा? ना मैं धनवान होऊंगा ना गरीब होऊंगा। अब ये जेब जरूर चिल्ला सकता है कि मैं लुट गया, ये दूसरा जेब कह सकता है कि मुझे तो भगवान ने छप्पर फाड़ कर दे दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही गुरुदेव ईश्वर स्वरूप जी कहते थे कि जब ज्ञान मिलता है, जब बोध होता है, तो लक्ष्मण जी महाराज कहते थे कि वो कहता है कि कितनी भी सदियां बीत गई कुछ भी नहीं हुआ। और कहां सदियां बीती? मैं तो जहां था वहीं पे हूं। मैं तो जैसे एक स्वप्न देख रहा था, जैसे मैं घूम फिर कर आ गया। हमारे देखने की दृष्टि एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाती। जब बोध मिलता है तो उस क्षण समस्त सृष्टि अपना स्वरूप दिखाई देने लगती है, और साथ ही साथ उसे न तो कुछ खोया न कुछ पाया। हम कई बार कहते हैं अरे कई जन्मों का चक्कर लगाया, वो कहते कहां लगाया? क्योंकि समय से अब वो परे हो गया। अब तुम्हें लाखों योनियों में लाखों बरस बताए, लेकिन बोध मिलते ही वो लाखों बरस स्वप्न की तरह चले गए, क्योंकि अब वो समय से परे का अनुभव है। वो अनुभव टाइमलेस है। उस अनुभव में न तो समय का अस्तित्व है, न अंतरिक्ष का अस्तित्व है, न पदार्थ का अस्तित्व है। अब वो बोध परमेश्वर का अस्तित्व। तो इस तरह से जब हमको समझ में आती है बात, तो हृदय में अपने आप भावना आती है शिवोहम। तो बाबा कहते थे कि अगर तुम चिल्लाओगे शिवोहम शिवोहम तो जूते पड़ेंगे, क्योंकि तुम जब शिवोहम शिवोहम कहोगे तो लोग कहते हैं अच्छा तुम शिव होते लो, हम तुमको एक पिटाई करके बता देते हैं क्या हो तुम, तुम्हारी औकात बता देते हैं। तो शिवोहम कहने की बात तो है नहीं, लेकिन शिवोहम अनुभव की बात है। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है आपके भीतर के बोध को, लेकिन इस अनुभव को सतत सोचते रहने में, इस अनुभव को सतत व्यवहार में लाने में कोई बुराई नहीं है। सतत चिंतन में, सतत इस जाप में भी कोई बुराई नहीं है कि शिवोहम, क्योंकि किसी न किसी दिन बादल छटी जाएंगे, किसी न किसी दिन मेरे भीतर के अंधेरे मिट जाएंगे, किसी न किसी दिन वहां पर परमेश्वर का प्रकाश हो ही जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे अपने जीवन को सतत प्रयासशील रखना जरूरी है। तो भगवान का स्वरूप क्या है? एक वो सतत क्रियाशील है। सृष्टि में जो क्रियाएं दिख रही हैं वो समस्त भगवान की क्रियाएं, समस्त क्रियाएं भगवान की। भगवान सतत क्रियाशील है, और मजेदार बात है कि वो 5 तरह की क्रियाएं करता है, और वो 5 तरह की विरुद्ध प्रकृति की होने के बाद भी वो एक साथ करता है। वो क्या करता है? परमेश्वर इस सृष्टि की उद्भव करता है, उसका मेंटेनेंस करता है, पालन करता है, उसको रक्षा करता है, संभालता है, उसका नाश करता है। साथ ही साथ वो अपना स्वरूप छिपा लेता है, क्योंकि कण कण जानता है कि मैं शिव हूं, लेकिन वो अपना स्वरूप छुपा लेता है। इसको पिधान कहते हैं या तिरोधान कहते हैं। वो अपना विलिंग ऑफ वंस ओन नेचर, भगवान अपने स्वयं के स्वरूप को छिपा लेता है। और फिर अंततः जब आप अपने बोध के प्रति अग्रसर होते हो, जब आप शंकर को प्रणाम करके उसकी ओर चल देते हो, तो फिर वो अनुग्रह करता है, और अनुग्रह करके अपना स्वरूप उजागर कर देता है। जब उसकी तरफ जाते हो फिर वो स्वरूप नहीं छिपाता, वो अपने स्वरूप को उजागर कर देता है। इस तरह से 5 अन्य अन्य क्रियाएं, जैसे सृष्टि और संहार हमको लगता है कि ये अलग अलग है,
और ये विपरीत प्रकृति की, एक बार सृष्टि बन गई और अब संवार जब अरबों साल बाद संवार होगा, ऐसा नहीं है। मैं अगर एक शब्द भी बोलता हूं तो उसकी सृष्टि हो रही है, और उस शब्द के बाद जब दूसरा शब्द बोलता हूं तो उस प्रथम शब्द का संवार हो चुका है, और बीच में क्या है, एक शब्द की सृष्टि, देन उस शब्द का उच्चारण जिसके द्वारा आपको वो शब्द सुनाई दिया, उसके बाद में वो शब्द शांत हो जाता, उसके बाद में अगला शब्द आपके कान में पढ़ने के लिए तैयार होता है। तो इन दोनों शब्दों के बीच में क्या है, शाक्तोपाय का योगी यहीं पर ध्यान करता है कि दो घटनाओं के बीच में शुद्ध चेतना है। अगर एक गहना गला दिया जाए सोने का, उससे दूसरा गहना बना दिया जाए, तो दोनों गहनों के बीच में क्या है, शुद्ध स्वर्ण। ऐसे ही चेतना से सृष्टि बनती है, मेरे शब्द भी चेतना से आ रहे हैं, और जब वो खो जाते हैं, छुप जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो अगला शब्द आना लगता है। मैं एक कदम चलता हूं, उसका कुछ नाम रख दो, फिर एक अगला कदम चलता हूं, उसका कुछ नाम रख दो, तो एक कदम जब समाप्त होता है दूसरा कदम शुरू होता है। उस समय क्या है, शुद्ध चेतना। एक शब्द के बीच में और दूसरे शब्द के बीच में शुद्ध चेतना, एक कार्य के बीच में दूसरे कार्य के बीच में शुद्ध चेतना। माला के एक मन के और दो दूसरे मन के बीच में क्या है, वह तार जिसने इसको पिरो रखा है। माला को जिसने पिरोया है, वो तार को देखना हो तो कहां जाना पड़ेगा, दो मनकों के बीच में। ईश्वर को जानना होगा तो कहां जानना पड़ेगा, कहां ध्यान करना पड़ेगा, दो क्रियाओं के बीच में। क्रियाएं अभिव्यक्ति हैं, लहरें हैं, और दो लहरों के बीच में क्या है, शुद्ध समुद्र, शुद्ध आर्णव है। उसका नाम हम कुछ रख दें, एक लहर का नाम राम रख दिया, दूसरे नाम का कृष्ण रख दिया, एक राम की लहर निकल गई, कृष्ण की लहर निकल गई, उसी जगह पर तीसरी लहर आ गई। लेकिन जब कोई लहर नहीं है तो क्या है, लहर विहीन समुद्र क्या है, मात्र शांत आर्णव, मात्र शांत समुद्र। और लहरों का अस्तित्व क्या समुद्र से अलग है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लहरें होंगी तभी जब समुद्र है। तो जो अभिव्यक्त सृष्टि है वो अनभिव्यक्त सृष्टि का ही हिस्सा है। अभिव्यक्त सृष्टि और अनभिव्यक्त सृष्टि दोनों के बीच में किसी तरह का कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे समुद्र और उसकी लहरें, उस लहरों के बीच में परमेश्वर, यानी दो लहरों के बीच में अगर हम ध्यान करेंगे तो किस पर ध्यान जाएगा, मात्र समुद्र पर ध्यान जाएगा। एक स्वर्ण और गहने और दूसरे गहने के बीच में सिर्फ स्वर्ण पर ध्यान जाएगा, एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में मात्र चेतना पर ध्यान जाएगा। इसलिए इस तरह से शाक्तोपाय का साधक परमेश्वर के स्वरूप को निहारने के लिए समस्त अपना ध्यान, अपनी दृष्टि, अपना एकाग्रता उन दो गतिविधियों के बीच की गति करता है। संसार क्या करता है, शब्दों पर ध्यान देगा। हम क्या करेंगे, सिर्फ शब्दों पर ध्यान देंगे और अंतराल पर कभी ध्यान नहीं देते। हम चलेंगे तो पैर संभाल के रखना, कहीं गिरने जाओ तो उस पर जरूर ध्यान देंगे, लेकिन दो पैरों के बीच का जो अंतराल है उस पर कभी ध्यान नहीं देंगे। इसलिए हम अगर उस पर ध्यान दें जो बीच का है तो वो परमेश्वर है। तो भगवान सतत क्रियाशील है। इसके बाद वो सबका स्रोत है। अभी हमने पढ़ लिया था, यस्योन्मेष निमेषाभ्याम जगत प्रलयोदयो तम शक्ति चक्र विभव प्रभवम शंकरम स्तुमा। वही जगत या सृष्टि चक्र का विभव भी है और प्रलय भी है। वहीं से शक्ति चक्र जन्म भी लेता है और उसका विलय भी, अंत भी वहीं पर होता है। यानी वही उसका स्रोत भी है और अंतिम विश्रांति भी है। अब आपका भी घर है, वहीं से आप निकलते हो, ये आश्रम में आ गए, यहाँ के कार्यक्रम के बाद आप कहाँ जाओगे, वापस आपके घर। घर किसको बोलते हैं, जहां पर कि बाय डिफॉल्ट आप रहते हो। जब आप रात को 2 बजे कोई ढूंढेगा तो सोचेगा नहीं घर पे मिलेगा, अभी कहाँ जाएगा इस समय में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप आपके घर पे रहते हो। इसलिए बाय डिफॉल्ट समस्त सृष्टि अनभिव्यक्त है। जब भगवान उसकी अभिव्यक्ति करते हैं तो एक सर्ग होता है, एक समय होता है जिस समय के लिए वो अभिव्यक्त होता है, क्योंकि समय भी तभी रहता है जब सृष्टि अभिव्यक्त हो। अनभिव्यक्त स्थिति में वो समय से परे होता है। अब हम कह सकते हैं अनभिव्यक्त स्थिति में वो करोड़ों बरस तक रहता है। ये करोड़ों बरस उसके लिए क्षण भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है, न वहां अंतरिक्ष है, न वहां पर कोई समय है। इस तरह से अगर हमें हृदय में इस बात की अवधारणा स्पष्ट हो जाती है कि परमेश्वर सबका स्रोत है,
तो फिर हम समस्त सृष्टि को ईश्वरीय दृष्टि से देख सकते हैं। तभी कई संत कहते हैं जित देखूं तित तू, जिधर देखूं मुझे तू ही तो दिखाई देने लगता है। वो सबका आश्रय है और वो परमार्थ है। परमार्थ का मतलब होता है अल्टीमेट प्रॉपर्टी। अभी हम बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी करते हैं, मकान बना लिया, अब कार लाना है, अभी कार ले आए, अब हमारा को इसका जरा थोड़ा सा डेकोरेशन करना है। घर बना लिया, इसमें हमको फर्नीचर लगाना। हम प्रॉपर्टी खूब इकट्ठी करते, सोचते धन इकट्ठा हो जाए तो हमको बहुत बड़ा मजा आएगा। लेकिन उस समस्त प्रॉपर्टी के बाद भी ना तो इस प्रॉपर्टी के पाने की इच्छा का अंत है, ना कुछ ऐसा है कि पा लेने के बाद में समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाए। कितना हम ये पालेंगे, उसके बाद भी हमको नई परिधियां दिखाई देंगी। उन परिधियों तक जाते जाते हमको और नई परिधियां दिखाई देंगी। इन परिधियों का अंत नहीं है, केंद्र का ही अंत है, परिधियों का अंत नहीं है। तो केंद्रोन्मुख जो होता है, परमेश्वर की दिशा में जो चलता है, उसी की यात्रा का कहीं अंत है, संसार की यात्रा का कहीं अंत नहीं है। तो इसलिए वो परमार्थ है। परमार्थ केंद्र में है और हम सतत केंद्र से दूर जाते हैं। संसार की यात्रा में केंद्र से दूर जाते हैं और उसका कोई अंत नहीं है। और ये वासनाएं ऐसी हैं जो हमारे अंतस में हमारी आत्मा के ऊपर आवरण बना देती, ताकि मृत्यु के बाद भी ये वासनाएं फिर क्रियाशील हो जाती। और इस क्रियाशील वासना के कारण हमें वही पुनर्जन्म लेना पड़ता है और पुनर्जन्म का स्वरूप भी तय हो जाता है कि हम उसी दिशा में फिर जाएंगे। फिर जिस दिशा से हम जाते जाते अपना शरीर त्याग करते हैं, उसी दिशा में हम पुनः आगे बढ़ेंगे। अगर हमारी ये वासना से मुक्त होकर हमें इस शरीर को छोड़ना है, हो सकता है कि परमेश्वर के बोध से फिर भी दूर रह जाएं। लेकिन अगर दिशा है हमारी केंद्रोन्मुख है, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन है, तो किसी न किसी दिन हम उस परमेश्वर के बोध को प्राप्त कर लेंगे। भगवान भी कहते हैं कि तुम मेरे और आओ। करोड़ों में, लाखों में, कोई सहस्त्रों में कोई एक है जो मेरी ओर आता है। अन्यथा जो छोटे छोटे देवताओं में छोटी छोटी इच्छाओं को लेकर पूजा करता है, मैं भी उनकी छोटी छोटी देव बनकर उनकी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति कर देता हूं। लेकिन जो मेरी ओर आता है उसकी समस्त व्यवस्था मैं कर देता हूं। योग क्षेम वहम में हम, उसकी योग की और क्षेम की मैं व्यवस्था कर दूंगा कि तुम जो पाओगे फिर उसको खोगे नहीं। यही परमार्थ है। परमार्थ वो होता है जिसको पाने के बाद अब और कुछ पाना बाकी नहीं है। एक बूंद की यात्रा समुद्र की ओर होती है, उसे कहीं भी डाल दो वो समुद्र की दिशा में ही जाएगी, क्योंकि उसको उसके स्रोत पर जाना है। जिस समुद्र से वो निकली है उस समुद्र पर जाना है, इसलिए उसकी दिशा वही होगी। यहाँ समुद्र हमारा प्रतीक है परमेश्वर का और बूंद है प्रतीक एक मनुष्य की। उसकी आंतरिक इच्छा, आत्मा की दिशा ईश्वर की है, लेकिन हम आत्मा की सुनते नहीं। अंतरात्मा की आवाज परमेश्वर की ओर ले जाती है, लेकिन हम सुनते हैं उस मन की जो इस संसार में रमा है, जो इस माया के अधीन है। वो मन का प्रकाशक है लेकिन मन से परे है। मन का प्रकाशक है लेकिन वो मन नहीं है, वो मन से परे है। अनिश्वरवादी मन को ही मान लेते हैं ईश्वर, कि मन बुद्धि जो अपैरेटस है वही मेरा सच्चा स्वरूप है। आत्मा से इनकार करते हैं। विज्ञानवादी लोग आत्मा से इनकार करते हैं, लेकिन आत्मा के अस्तित्व के बगैर कई बातें व्यक्त, अभिव्यक्त या व्याख्यात नहीं की जा सकती। ईश्वर प्रतिविज्ञा में उत्पल देव जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि किस तरह से आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया जा सकता है। उसमें सब तर्कों के द्वारा परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करना संभव है। तर्क, सत्तर्क भी होते हैं और फिर कुतर्क भी होते हैं। कुतर्क होते हैं कि आत्मा है तो दिखती क्यों नहीं, कहां से हम परमेश्वर को खोजें, तो हमारे भीतर कैसे खोजेंगे, तो बाहर ही होगा। संसार में भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान तो बहुत दूर होते हैं। संसार में भगवान का हमको कहीं दिखते हैं क्या? तो इस प्रकार के कुतर्कों से हम इस संसार में लोगों से ताप का पड़ता है, सामना पड़ता है। कारण क्योंकि हम सब माया के चश्मे से इस सृष्टि को देखने के आदी हो चुके हैं। यही कारण है कि हमको सत्य प्रतीत नहीं होता। फिर ईश्वर प्रतिविज्ञा कहती है कि सा स्फुरत्ता महासत्ता देश काल विशेषणी शेषाम सारतया प्रोक्ता हृदयम परमेष्ठिना। यहां उन्होंने 1000 वर्ष पहले घोषणा कर दी थी कि वो सत्ता देश और काल, स्पेस और टाइम से परे है।
देश काल विशेषणी, देश मीन्स स्पेस, काल मीन्स टाइम, देश और काल से विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब होता है परे, जुदा है, अलग है, उससे सुपीरियर है। तो इस देश और काल से, समय और स्पेस से विशिष्ट है। शेषाम सारतया प्रोक्ता हृदयम परमेष्टिना, वही इस सृष्टि का सार है और वो भगवान का हृदय है। ये ईश्वर प्रतिविज्ञा में लिखा है। तो हमको ईश्वर प्रतिविज्ञा, स्पंद, शिव सूत्र, गीतार्थ संग्रह, जितने प्रतिविज्ञा शास्त्र, जितने ये काश्मीर शिव दर्शन के ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों में परमेश्वर के स्वरूप का निरूपण किया गया कि परमेश्वर चैतन्य रूप है, सतत क्रियाशील है, सबका स्रोत है, सबका आसरा है, सबका अंतिम गंतव्य है, और वही परमार्थ है, वही सनातन है। सनातन का मतलब होता है कि जिसने कभी जन्म नहीं लिया। जो जन्म नहीं लेता है उसका आकार भी नहीं होता, उसकी मृत्यु भी नहीं होती, और वो समय से परे होता है। ये सनातनता की मूल परिभाषा है। और मैं आत्मा रूपों से सभी जीवों में उपस्थित हूं। मैं सभी जीवों में रहता हूं, जीव मुझ में नहीं रहते, क्योंकि वो अज्ञान के कारण अपने आप को ईश्वर से अलग समझते। वो समझते हैं कि ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं। इस तरह से हमारी अलगाव की भावना, वो मानते हैं कि भगवान इस सृष्टि में तो रह ही नहीं सकते। इस तरह से हम जब भगवान को इस सृष्टि से अलग समझते हैं, इस सृष्टि में निहित नहीं समझते। चाहे हम बोलने को बोल जाते हैं कि कण कण में भगवान, लेकिन हम कण कण में नहीं, कण कण भगवान है। कण कण में भगवान नहीं है। कण कण में ऐसा नहीं है कि कोई कण कण के अंदर, जैसे गुब्बारे के अंदर हमने हवा भर दी, ऐसे भगवान है। वरन कण कण स्वयं भगवान है। लेकिन इस बात का बोध नहीं होता हमको। हम बोलने को बोल जाते हैं कण कण में भगवान, समस्त सृष्टि में सर्वव्यापक है। लेकिन इस सर्वव्यापकता का, इस समस्त अभिव्यक्ति का सार हमारे हृदय में जब अंतर मन से समझ में आए, इसका बोध हो जाए, तो मनुष्य का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उस समय मनुष्य के जीवन में किसी तरह का विलोम आता ही नहीं। क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, भय, इस सब से मुक्त हो जाता है। इन भय के परे हो जाता है। क्योंकि भय क्या है? आपका योग है, उसका क्षय न हो जाए। भगवान कहते हैं योग क्षय में वहां में हम वही उसको संभालते हैं। क्योंकि हमने जब परमार्थ पाया, वो कभी खोता नहीं। वो कोई चोर नहीं ले जा सकता, डाकू नहीं ले जा सकता। इस तरह से हम परमेश्वर के स्वरूप को यहाँ समझते हैं कि वो देश काल से परे है और वो परम कारण है। जो अंतिम बात कि वो परम कारण है, अल्टीमेट कॉज है। जैसे हम कहते हैं कि मुर्गी कहां से आई? अंडे से आई। और अंडा कहां से आया? मुर्गी से आया। लेकिन दोनों का परम कारण चैतन्य है। दोनों का परम कारण, सृष्ट कारण हमको दिखाई देता संसार में कि मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी आई। लेकिन ये तो हमारा सृष्ट कारण है। परम कारण तो परमेश्वर ही है। और हम जो कुछ संसार देख रहे हैं वो मेरी चेतना से भिन्न नहीं है और हो भी नहीं सकता। क्योंकि संसार के अंदर जो सौंदर्य दिखाई देता है, उस सौंदर्य की उपस्थिति संसार में नहीं है। उस सौंदर्य की उपस्थिति मेरी चेतना में है। और उसी के कारण, क्योंकि अगर मान लो कोई भी चेतना इस सृष्टि को देखने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो क्या उस सौंदर्य का कोई अस्तित्व हो सकेगा? संभव ही नहीं है। अगर कोई एक भी गीत न सुनेगा तो कोई कैसे कहेगा कि ये बड़ा सुंदर गीत है, कर्णप्रिय गीत है? ये तभी संभव है जब वो उसका आत्मा से उसकी अभिव्यक्ति होती है और आत्मा उस अभिव्यक्ति का आनंद लेता है। जैसे कोई बच्चा धुरंधा बनाता है और उस धुरंधे का आनंद लेता है, ऐसे ही मनुष्य की चेतना इस सृष्टि को बनाती है और सृष्टि का आनंद लेती है। तो परमेश्वर का स्वरूप हमारे भीतर है चेतना के रूप में। और जो हम मैं बोलते हैं, इसका इसेंशियल स्ट्रक्चर परमेश्वर है। जो मैं है वही परमेश्वर है। तो आज हमारा जो सेशन था उसका समय समाप्त हो रहा है। मैं आप सबको सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। माँ प्रभा देवी जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत दिनों बाद मुझे दर्शन दिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार कमला जी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुधीर सोपोरी जी को कि देवी जी को के कुछ वचन अगर वो कुछ हमारे सामने प्रस्तुत करें। देवी जी हमसे जुड़े और आशीर्वाद दें। चलिए देवी जी आशीर्वाद दे रही है सबको। कोई श्लोक बोलेंगे अगर?
तो इन्होंने सब ऑर्गेनाइज किया, ये आपसे मिले थे, आश्रम में मिले हैं और गुप्ता जी से तो मिले हुए हैं। आप सबको आशीर्वाद बन्यू क्या श्लोका बन्यू। इनको पता है, चलिए सबको आशीर्वाद इनकी तरफ से। प्रणाम प्रणाम। मेरा आशीर्वाद। बड़ी प्रसन्नता हुई आपने ये उत्सव मनाया अभिनव गुप्ता, प्रसन्नता हुई। आपका आशीर्वाद है देवी जी। आशीर्वाद मेरा आशीर्वाद है, आपका नमस्कार। प्रणाम प्रणाम सादर प्रणाम। मैंने इनको कहा गुप्ता जी अपना व्याख्यान कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा मैं उनके दर्शन करूंगी, तो मैं कंप्यूटर को नीचे उतार के लाया इनके पास ही, तो गुप्ता जी का व्याख्यान थोड़ा सुना इन्होंने, तो सब बहुत प्रसन्न है कि आप। Sir, we are fortunate to have a darshan. And for me, it's after years now we got it. After a long time, उनको थोड़ा बहुत है। ओके, आशीर्वाद। चलिए हमारी तरफ से भी thanks to both the speakers on my behalf, on behalf of everybody, on behalf of Devi ji. Mark gave a very good description of Tantra Lok, the width and depth of different dimensions of Tantra Lok. Devi ji was telling me that Abhinav Gupta, the Tantra Lok was written within 36 days. 36 annex of Tantra Lok were done only in 36 days. So how he wrote it, Swamiji used to tell them that probably they must have shortened those days, that whatever he was speaking, Shishyas were writing. So this was the magic of Abhinav Gupta, that he could bring out such a huge volume of knowledge, resources, his own experiences in the form of Tantra Lok, which has set the stage of Kashmir Shaivism for a long time to come. And it was such a pleasure to listen to Dr. Gupta. I seeing him after a long time. बहुत सरल शब्दों में इन्होंने जो शैविज्म का डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके लिए कई लोग कह रहे हैं कि हमें इनका टेलीफोन नंबर चाहिए ताकि वो इनसे संपर्क कर पाएं। बहुत वर्ष पहले देवी जी गुप्ता जी के आश्रम गई थी, उद्घाटन किया था वहाँ पे, और हमारे इनसे आना जाना रहा थोड़ी देर, बट आज काफ़ी समय के बाद इनको मैं फिर देख रहा हूँ। बहुत प्रसन्नता हुई आपसे फिर आज दर्शन करके आपके। तो इट्स ए ग्रेट प्रोग्राम विच हैज बीन सेट बाय सुनील जी, एवरीबॉडी, एंड blessings to everybody from Devi ji, and thanks to everybody for participating in this program. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Devi ji. Thank you, Sudhir sir. Bharti ji, can you invite Sandeep ji? जी हेलो जी, हेलो। Sandeep ji, can you please come and thank Dr. Mohanlal Gupta ji? नमस्कार महाराज। नमस्कार डॉक्टर साहब। ये एक बड़ा ही एनलाइटनिंग सेशन रहा डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता जी के साथ, और मैं समझता हूँ हम बहुत ही लकी थे आज कि माँ प्रभा देवी जी भी आई और उनका भी हमें आशीर्वाद मिला। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत दिनों बाद दर्शन हुआ मुझे भी। जी 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 जी। और क्या बताऊं मैं इस सेशन के बारे में। डॉक्टर मोहनलाल जी का जो आज का उनका जो टॉपिक था, परमेश्वर इन कश्मीर शैविज्म, उसमें इन्होंने एक बहुत छोटे से समय में काफी सारी जो चीजें हैं कश्मीर शैविज्म की डिस्कस की, और बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने डिस्कस की। चाहे वो इन्होंने 5 acts ऑफ परमशिव, जिसे हम सृष्टि, स्थिति, संहार, विधान या अनुग्रह कहे, या फिर चैतन्य आनंद इच्छा ज्ञान क्रिया, जिसको उन्होंने फिर परा पश्यंती मध्यमा वायक्ति इस रूप में भी बताया। बहुत ही बढ़िया था ये सब। और उनकी बहुत अच्छी बात, जो एक बड़ी एक लॉजिकल बात भी थी, उन्होंने समझाई सृष्टि, स्थिति, संहार
पिदान अनुग्रह में ये बड़ा एक अच्छी चीज है कश्मीर शैविज्म की, कि कश्मीर शैविज्म में बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स लिए हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, चाहे वो चैतन्य आनंद इच्छा ज्ञान क्रिया हो, चाहे वो सृष्टि स्थिति संहार पिदान या अनुग्रह हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इच्छा ज्ञान क्रिया की बात करते हैं, चैतन्य आनंद इच्छा ज्ञान क्रिया, चैतन्य आनंद मतलब जिसको हम शिव शक्ति कहते हैं, और फिर इच्छा ज्ञान क्रिया जो एक्सपेंशन ऑफ शिव शक्ति है। तो वो अगर हम प्रैक्टिकल में भी देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि कोई भी चीज करने से पहले, कोई भी चीज अगर हम करना चाहते हैं तो पहले उसकी इच्छा होती है, हमें इच्छा होती है, उस इच्छा से हमें ज्ञान उत्पन्न होता है, मतलब हमें वो एक हिसाब से प्रेरित करता है, वो ज्ञान ले हम, फिर जब हम ज्ञान भी होता है तो फिर हम क्रिया भी कर सकते हैं। तो एक क्रिया के पीछे ज्ञान भी है, इच्छा भी है, और शिव शक्ति तो है ही है, वो तो सब जगह है ही है। इसी तरीके से डॉक्टर साहब ने कितने बढ़िया तरीके से सृष्टि स्थिति संहार पिदान अनुग्रह भी बताया, जो शक्तोपाय में आता है, कश्मीर शैविज्म में शक्तोपाय है उसमें आता है। और एक्चुअली जो 5 एक्ट्स ऑफ लॉर्ड शिवा है ये तो सभी जगह ही आते हैं, हर एक एक्टिविटी में आते हैं। और डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया यहाँ पे भी समझाया कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड, कि पहले वर्ड की सृष्टि होगी, फिर वो स्थिति होगी उसकी कुछ देर तक, फिर उसका संहार हो जाएगा, फिर उसके बाद हम पिदान एक हिसाब से भूल जाएंगे उसको, देन वी विल क्रिएट अगेन। तो बहुत ही ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है कश्मीर शैविज्म की। इसी तरीके से इन्होंने कॉन्शियसनेस के बारे में भी बताया, अलग अलग तरीके से बताया। कश्मीर शैविज्म में तो प्रकाश और विमर्श को हम मानते हैं, और कॉन्शियसनेस को उन्होंने कितना बढ़िया तरीके से समझाया कि कॉन्शियसनेस को उन्होंने ओशन और गोल्ड के रूप में भी हमें समझाया कि क्या होता है कि जो गोल्ड रिंग है या गोल्ड चेन है, तो बेसिकली गोल्ड रिंग और गोल्ड चेन एक्चुअली गोल्ड है। इस तरीके से उन्होंने चैतन्य को जो है वो कॉन्शियसनेस को उन्होंने ओशन के रूप में भी समझाया, इन्होंने कहा कि जो वेव्स है, चाहे उनको आप राम कहे चाहे कृष्ण कहे, बट एक्चुअली ये सारी वेव्स जो है दिस इज नथिंग बट कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज चैतन्य। और लास्ट में इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया क्वेश्चन मार्क, वो उसमें बड़ा एक लंबा टॉपिक हो सकता था कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं समझता हूँ कि उस टॉपिक को हम आगे लेके जाएंगे कि मैं ही परमेश्वर हूँ, क्योंकि ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मैं किस तरीके से परमेश्वर हूँ। मैं फिर से जो है, क्योंकि काफी समय गुजर चुका है, मैं फिर से जो है सभी का धन्यवाद करता हूँ जो आज इस कार्यक्रम में आए, आज जो स्कॉलर्स आए, आचार्य मार्ग जी आए और डॉक्टर मोहनलाल जी आए और माँ प्रभा देवी जी आए, सबको मेरा नमस्कार, जय श्री राम। धन्यवाद संदीप जी। मैं अनुरोध करूंगा, राजीव जी आप कुछ कहना चाहते थे? राजीव। Yes. Yeah, thank you Sunil ji for giving me I want 2 minutes. I will not take much more time. Actually, it's very nostalgic for me. Nostalgic because there is an among all the acharyas there is an educationist guru among me who I did my BTech under his vice chancellorship, that is Sopuri sir. And there is a spiritual guru in the form of Dr. Gupta. They are both my gurus. And Devi Ma is guru of all of us. And I will take a minute in explaining what is the relation between all these disciples and gurus. Dr. Gupta, when he finished his the study of Upanishads and all, he was told by his guru to I don't know if Dr. Gupta is listening or not. So he was told by his guru, you go and look at this Kashmir Shiva Darshan. Go and look after this. It is a much superior education than what you have attained till now. So he goes and he finds Lakshmanju he had only taken his Samadhi. So he was told that Devi Ma is there who has served Lakshmanju and she will be your guru. And he goes to sir, with your permission, I am telling you. बहुत अच्छा लग रहा है आपको। Thank you. So, please go ahead. My guru, Dr. Gupta, goes to Delhi
where Sudhir Sokoriji is the Vice Chancellor of JNU, from where I did my BTech under his Vice Chancellorship that time. So he goes there and tells him that I have come here and to the Devi Ma, Devi was in Srinagar. From Srinagar, she had come to Delhi. And Sudhir Sokoriji, received him in his home, kept him for 4 days, did a lot of discussions, lot of documents were given to Dr. Gupta, and that is how the Harihar Trika Ashram came into existence. Few things that I do remember about Devi Ma and Dr. Gupta is that I am from army, sir. I have served army. So I will give an example of army only. Duryodhana and Arjuna, these are words of Dr. Gupta, these are not my words. So Dr. Gupta, as per the words of Dr. Gupta, Duryodhana and Arjuna, I am now speaking about something called as independence, Swatantra. This is a very important word in Shaivism. Now, Duryodhana had an option to selecting something from Krishna, and Arjuna had, the option of selecting something from Krishna. So Duryodhana selects a big army, very big army, and the Arjuna, he selects Krishna. So please understand what Devi Ma says. This is the sar. This is the whole truth about Shaivism. You are bound to your roots, then to this whole universe. Secondly, I do remember one more thing about Dr. Gupta, what he says in his lectures and all. You can find thousands of them, thousands on Upanishads, or thousands on Shaivism. One of the lectures he said about Newtonian physics. Newton, very great. It is a sentence called "God does not play dice." So everything happens with God. But our Trika doesn't say that. It is Dr. Gupta which says this. Is that our Trika believes in no rules. 2 and 2, 4. 2 and 2 is 4 in India. It is in America. It is in Russia. 2 and 2 is not becoming 5 anywhere. But as the disciples of Shaivism, I don't believe in this. I am not bound by any rules. That is why I am superior. I think I am most inferior of all. I can bend any rule. I can do anything I want. That is what is taught by Dr. Gupta to me. We can't be onlookers. That is a very important sentence. Please understand this sentence. We can't be onlookers. From my Matamal was in Ganpatiyar, so we used to play a game. There was a churaha on which we used to, count how many people will go. So the more number of people, the person used to win. So some people go right, some people go left, some people go straight. But please understand, it is not me who is controlling. It is the one who is, walking on that road, and he is taking an independent decision whether I will go right or I will go left or I will go straight. Right. That is how Dr. Gupta explains all these things. Now, I have said about this thing. I have also said that spirituality has no bounds. Spirituality is one. It is explained. The spirituality is explained in Shaivism is one process which has no bounds at all. That is why Kashmiri Shaivism prospered. It prospered. And at one point, it went into an ebb because it's a sine curve. Whatever goes up comes down, then it comes back again, back up again. So, sir, Sopari sir, Dr. Gupta sir, I am really enlightened today. It is my day of enlightenment today that you have shown me. Both my gurus are here, and Devi Ma is, precious. She's precious, and she gave darshan to all of us. And I am telling you, sir, I am telling the whole audience who are on Facebook, who are on Zoom, you have been blessed today. You are enlightened today. These are the people who made this Shaivism go to every household. That is why Shaivism has, explored every town of India, every state of India. It is because of these people. It is not because of me. It is not because of the present generation. Present generation is not interested. I am thankful to Sunilji, who is giving chance to the people to understand Shaivism. We will take the work of Devi Ma
of the Sokori sir, of Dr. Gupta, and other acharyas. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Rajiv ji. Thank you so much. I request with us, Rajnish ji is there. I think Sanjay ji, you are there? Hello. And Sadanand ji, yeah, you want to say something? Hello. Yeah, please. There is a very good stotra. Very good stotra. I would like the participant to hear for 2 minutes. No, Sadanand ji, we will close it. We will listen it out when we close the session once for all. So I would request Sanjay Raina ji to first recite the Shanti mantra, and then we will come back to you. Composed by sadhika sarve vinashyanto vidushika avastam shambhavinastu prasannastu guru sada namami yamani natha lekhalam kritapantalam भवामी बहुसंतात मानपनसदामिनि परम परस्थं गहनादिनादिं एकं निविष्टं बहुधा गुहासु सर्वालयं सर्वचराचरस्थं तमेव शंभु शरणं प्रपद्ये। ओम शांति 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 ओम। सर्वत्र नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। Thank you, Bharti ji. Thank you, everybody who has said. Yes, Sadanand ji, you want to play that recording? Yes, Sadanand ji, you want to? Yeah. Hello. Yeah, Sadanand ji, please play the recording. I was thinking that I am interfering with the speech of some. No, please no. Then I continue for 2 Yeah, minutes. please continue. Yeah. Okay. Will it take some time more? No. Starting. Rajni ji, thank you so much. Thank you, Sadanand. Thank you so much. Anybody else wants to say something before we close the session? Yes. Yeah. Hello, Dr. Saab. Namaskar. It's me, Arun.
Yeah, please, Arun ji. So मैं बस इतना ही कहना चाहता था, मेरी जो जर्नी है वो कश्मीर शैविज्म को अंडरस्टैंड करने में, आई हैव ऑलवेज फॉलोड गुप्ता, मिस्टर गुप्ता। उनके टॉक्स से ही मुझे लगता है मेरी लाइफ में ना, मतलब लाइक आई वॉक फॉर 3 hours लिसनिंग टू हिज टॉक्स। जब मैं इनके टॉक्स सुनता हूँ तो इट्स लाइक सिर्फ शाक्तोपाय और शाम्बोपाय तक मैं गया, उसके आगे मैं सुनना भी नहीं चाहता हूँ। So you have been very important in my life. It has been a very, like, I don't have words basically to express how your words have penetrated my being, and it has helped me blossom. So thank you so much for being around, because it's like that drishti has been provided by you to me. Thank you, Arun ji. Thank you. Thank you. Thank you very much. Just before we conclude, tomorrow we have Dr. Ramachandra Nagaswamy from Chennai. He is going to talk about the Abhinav Gupta's aesthetics and how the temple architecture in southern India got influenced by the Abhinav Gupta's art, and about the Carnatic music. And after him, there is another speaker, Dr. Meera Rastogi. So I request all the participants here as well as on the Facebook to stay tuned and join us tomorrow. Thank you very much. Thank you, Bharti ji. Thank you, Ashish ji. Thank you so much. Thank you, Dr. Gupta. And thank you, Sanjay ji, and all other participants, scholars who have joined today. Thank you, listeners. Thank you, Mark ji, very much for taking out your precious time and joining us, completing us with your wonderful talk. Sunil Raina ji. हाँ जी, बोलिए सर।